there is a fine line between helping and bothering. So मैंने कहा देखिए आपको उन्होंने सिखाया, आपका नाम लिया और मैंने कहा कि अब वो खुद कर रहे हैं 5-6 पॉइंट, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग व्हील उतर जाएंगे, पटरी पर चढ़ जाएंगे, राइट. सो बट टू क्लेम दैट यू टीच, मैन, आई वाज नॉट बोर्न विद दिस नॉलेज. मुझे डैनियल ने सिखाया, डैनियल को उनके मेंटर ने सिखाया. आप कैंडल से कैंडल चल रही है. अब ये ओसीओ वाला I didn't want to introduce to anybody, but Jay said, "Can you start teaching it? It's a benefit." So, अगर किसी benefit है तो maybe 3 months from now a new topic comes to get. So anyway, long story short, let's make money today. So that's our goal is morning areas, Monday to Friday areas, daily Nasdaq. Base is down, pressure is up, excuse me. हाँ जी, हाँ जी. या ये कर देंगे, जैज कर देंगे. हाँ. उसको पता है. अच्छा. वॉशरूम का बहुत बुरा हाल हो रहा है, मतलब अब तो हद कर दी. टैप कर दें. बार-बार कह रहे हैं हम लोग के लॉक कर देते हैं. यार चाबी आप एक दफा एड्रेस कर देना. या वो डिसेंट माइक होता है ना, और तो केवल हाँ ये भी क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो रहा है. आप समझ रहे. इनसे पूछना जैज से कल क्या हुआ. सर एक हद होगी ना. नहीं, ऐसा कर लेते, मेरा उसका हर चीज का हल होता है. हल है, सारे रोज के $5 पे करेंगे, हम एक परमानेंट जैनिटर हायर करेंगे, उसकी जॉब देखें. फिर आप आएंगे, आप $5 पे करेंगे. अब जैसे अगर 30 बंदे हैं, $150 इकट्ठा हो जाएगा. 150 में जैनिटर हायर हो जाता है. कोई जो मर्जी करे. नहीं नहीं देखिए, आई हैव हर चीज का सोल्यूशन है ना. सोल्यूशन ये है कि मिनिमम वेज $18 है, 125 की दिहाड़ी है, $5 रोज कंट्रीब्यूट हायर करेंगे, पूल में जाएंगे, वो वहां पर आपको हर चीज हर ट्रिप के बाद साफ मिलेगी, जिस तरह होटल्स में होती है ना. तो we will start implementing. $5 per use. Yes. फिर टाइम ज्यादा लगाएंगे, अंदर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी. नहीं वो रख लेते हैं, क्योंकि अब वहां पर हमारे लिए दूसरे ऑफिस में फायदा हमारे पास 2 हैं, राइट. तो वो मेल फीमेल रखा हुआ है, राइट. सो इट्स अ स्लाइटली बेटर. Anyway, we do what we do here every day. So, all right. So what was the night high? 19,800. Let's put it at 19,800. Of course, strike price will be 20,500. Events interest rate, big one, 19,660. 140 points move. Where's the price right now? 766. So right somewhere in between. Somewhere in between. ES. Let's look at ES. लेकिन आज कोई और रेड न्यूज नहीं है, 10 बजे नहीं है. हाँ, क्रूड ऑयल के, वो येलो है, ठीक है. सो वो हमें तंग नहीं. हमारा काम शुरू होगा 159 से 4 o'clock तक. बिकॉज मीनिंग जो स्पाइक्स है ना, क्योंकि होता ये कि उन मेजॉरिटी कंपनीज डोंट लेट यू ट्रेड द न्यूज, द स्पाइक्स. लेकिन उसके 15-20 मिनट बाद ना बहुत हैवी शुरू हो जाता काम. कोई मिड बैंड नहीं चलेगा, मैं आपको अब बता रहा हूँ.
कोई आप ग्रीन करेंगे वो रेड होगा, रेड करेंगे ग्रीन होगा। 30-20 में SRES भी नहीं चलना। आज सिर्फ और सिर्फ की फैक्टर्स हैं एरियाज, जो आपके एरियाज आए हैं, कहाँ से बाउंस हो सकती है प्राइस पोटेंशियली, क्योंकि 159 हाँ 159 के बाद, उससे पहले 11 बजे तक मॉडरेट है, लेकिन होना चाहिए। मीन ट्रेंड एकदम, या मार्केट बहुत स्लो रह सकती है, ये अभी 9:30 में पता लगेगा कि अभी देखें आते हुए ये आपका पहला मिड बैंड भी ठीक था, 8.5 तक नहीं गया, 8.5 आपका स्टॉप लॉस होता है, so that was fine. So where are we right now? Right in between S1 and R1. That's right in between. So today I will go on TikTok. अब देखें 758 पे SRES सेटअप चल चुका है, 30-20 पे लोअर हाई बना के आपको 12 पॉइंट दे चुका है, डन हो गया। गुड मॉर्निंग। 30-20 पे SRES का सेटअप अराउंड 758 पे डन हो चुका। Content, live, we are live. That's done. You pledge कर दो पहले, you will do the pledge. Your best friend is MES. Yes. Your boyfriend is MES. Your best friend, no. Boyfriend is MES. Oh, boyfriend exists, yes, not the best friend. Best friend will never be. Brother, today mid bands after 2, if you're staying, will be difficult. Because interest rate, mother of all news, is interest rate announcement. So be very careful today trading. And by even tomorrow, the after effects will stay, because the effects will go into European markets, and then we'll see what Trump says. And I know a lot of this is rigged anyway, but just saying. Good morning, जी सनी भाई, क्या हाल है? All right, mic is okay on Zoom as well. So 15:10, we have a first setup of SRES. So black, blue. Let's see how many points does it give you.
All right, good morning, everybody. Wednesday, March 19, 9:01 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are joining us at superareas.com. So today we are doing a free stream on YouTube and on TikTok. Interest rate is our big thing. So at 2 o'clock, we have fireworks. We have also uploaded a video on YouTube last night on how to place OCO orders. If you want to do a buy stop, you want to do a sell stop, that is all available on our YouTube channel. So how you can take advantage of news spikes, 930 spikes, how OCO orders work, everything is uploaded on NinjaTrader based on Super Areas algorithm. So that is done. Now today, let's look at Nasdaq. Nasdaq last night's high, since I am calculating low and high from 6 p.m. The 19,800, 797 is the high, 19,660 is the low. So in between, you have 140 points of swing for Nasdaq. What was it for high and low? You have high for 5690 to 5660, about 32 points worth of ES moves. Let's look at the value area. The value area for MES is, you have it at 5688 to 5657. 87 exactly. Value areas are there. Midpoint is there. Night session highs and low is there. Base is down. Pressure is up. If they cut interest rate, price is supposed to go up. If they make interest rate higher, which I don't think they will, but so Canada did cut. Let's see what happens for US. Right now, price is opening between R1 and S1. So let's see what happens next. So let me just quickly check my phone, and we'll go according to the plan. जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी. हाँ हाँ, तो मैंने कहा था ईद के बाद बैठेंगे. नहीं हम नहीं हमने नहीं इन्वेस्ट करना. यस ठीक है. ठीक है. हाँ एग्जैक्टली नहीं वो बाकी है, वो आहिस्ता आहिस्ता उतार लेंगे. यस नहीं वो हर चीज का सेपरेट है. वो ये इसकी एक्सटेंशन नहीं खुल रही, अपना नई बन रही है स्विंग. यस बिल्कुल ठीक. और यहाँ इस कंपनी ने उधर नहीं इन्वेस्ट करना. बिल्कुल सही. नो प्रॉब्लम. ओके. All right, so super quiet right now. It's stuck on that bar for about 4 minutes. So last night I did go long from value area night. So I had it and I woke up with a 5 micros reasonable profit. So if you can, even at night, you can see where the value areas are. They get on 60 minutes, just like an area trade, you can trade value areas. So the powerful. Yes. But yesterday's whole value area has been filled. Yeah. So वो भी हो गया. तो हमारे पास table पे अब value area नहीं है. So
ये जो आपके इन्होंने लिखे हैं ना, अगर आप देखें 60 मिनट का चार्ट, उसके अंदर बाउंस रही है वो, 60 मिनट के अंदर रही है। वैल्यू एरिया में ऑपोजिट ट्रेड आना होता है। नहीं नहीं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं ना, ऊपर से आ रही है तो पहले येलो पे टेस्ट होगी, और अगर येलो के अंदर चली गई फिर वो मजेंटा तक जाएगी, 80% फिल करेगी। तो ये कल का वॉल्यूम था 70%, सो ये विल फिल। वैल्यू एरिया में 5660 से लॉन्ग कर दें, यहाँ से लॉन्ग, हाँ अगर, लेकिन देख लीजिएगा कौन सा टच हो चुका है जनरल। सॉरी स्लाइटली इसको सॉरी मूव करना है 30 डन बस, ताकि ना ये ना है जी। हाँ जी, वो आपका हायर लो बन के आपका एक हैंडल से 1 टिक दिया उसने, तो ये एसआरई का सेटअप एमईएस में बन रहा है। आपकी ब्लैक कैंडल फॉर्म हो चुकी है, हाँ जी, क्योंकि 4 बार्स के बाद ब्लैक कैंडल फॉर्म हो जाती है। नहीं, अभी नहीं, बाय टू करना है, टू बाय टू ओपन इट व्हेन बोथ आर ग्रीन, क्योंकि अब यहाँ से ले लिया तो काइंड ऑफ निकल गया है, क्योंकि आपने रेडी रहना था 5, 6, 7, 8 से 4.75 ऐड करके, हाँ जी, वहां से बाय हो जाना था। अच्छा ठीक है, अब हमें यहाँ 4 टिक्स चाहिए, अभी तक उसने सिर्फ 1 टिक दिखाया था और वापस नीचे गई है, तो सेटअप आपने सही लिया, आप देखें। लेकिन अगर ये 4.75 अगेंस्ट आपके चली गई तो निकल जाएगा ट्रेड से, क्योंकि उसकी जो स्टॉप लॉस होता है ब्लैक कैंडल का, अगली ब्लैक कैंडल होता है। So let's see if it pushes it up. Yes, you are going with it, maybe 1 or 2 points. So it is such a slow time right now. It's slow time में ये आपको ना थोड़ा तंग करेगी कि हाँ जी, स्टॉप लॉस सर अगली ब्लैक कैंडल नहीं, टीपी 4 टिक्स तो मैं ले लेता हूँ 15-10 में। 4 टिक्स इजीली आ जाते हैं, मार्केट का मोमेंटम बनता है, 4 टिक्स निकल आते हैं, तो 4 टिक्स और 19 टिक्स लंबा है। यस, और उधर 8 टिक्स और आपका 34 टिक्स बहुत बड़ा है। हाँ, क्योंकि उसने अगली कैंडल तक आपको ट्रेड के अंदर रहना है। ज्यादा पावरफुल जो SRES के ट्रेड्स मैंने देखे हैं, R3 में ब्लैक कैंडल नीचे मिल जाए और S3 में मुझे ब्लैक कैंडल ऊपर की तरफ मिल जाए, वो फिर ब्लास्ट जाता है, वो ज्यादा लंबे पॉइंट्स मिलते हैं, 10, 12 पॉइंट मिल जाते हैं। अब देखें इधर इसने कैंडल तो बनाई, लेकिन वो कंसोलिडेशन में फंसी हुई है, मिड बैंड फ्लैट चल रहा है, बिल्कुल सीधा चल रहा है मिड बैंड, तो आपको यू हैव टू एग्जिट बिकॉज इट कैन 100%। 19 टिक्स कहाँ बनेगी, पहले एक नीचे बॉटम बनेगी, फिर दूसरी बॉटम, फिर तीसरी, चौथी बॉटम पे 19 टिक्स हो जाएंगे। हाँ, आपका स्टॉप लॉस कहाँ है इस वक्त? 83, 56, 83 माइनस 4.75, so 56, 78, 25 पे होगा। Yeah, that's fine. But let's see which way. 56, 78, 25 वहां पर स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर इन्होंने SRES का सेटअप देखा, लोअर लो देखा, लोअर हाई देखा, हायर लो देखा, ये हायर लो कह रही है कि मैं ऊपर नहीं जा रही, मैं ऊपर जा रही हूँ। इन्होंने ब्लैक कैंडल फॉर्म होते ही लॉन्ग लिया, लेकिन अगर वो सिर्फ ब्लैक कैंडल बना के फिर नीचे आ जाए तो आपने अगली ब्लैक कैंडल पे निकलना है ना, वरना तो ये गिरती जाएगी। तो ये मोमेंटम में ये बहुत अच्छे चल जाते हैं, क्योंकि आपने लिया, उसने 1 पॉइंट लिया, आप बाहर आ गए। 15-10 में 4 टिक्स मिल जाते हैं, 30-20 में 8 टिक्स मिल जाते हैं, 30-20 में 34 रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो वो ब्लैक कैंडल अगर बन गई नीचे की तरफ, तो अगेन उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बड़ी है R3 S3 के बाद कि ज्यादा पॉइंट मिलता है। अगर आप देखें 15-10 का मिड बैंड ऑलमोस्ट
आधे घंटे से बिल्कुल सीधा जा रहा है। दैट मीन्स के प्राइस में कोई मोमेंटम नहीं है, ना ऊपर जाने का ना नीचे जाने का। This is that of patience given. That's at this point it's no direction whatsoever because there's market is not open officially. Market doesn't have. अब यहाँ एक और ब्लैक कैंडल बनाने का, ये पहले एक आएगा, दो आएगा, दूसरा आ रहा है। तो जैसे 30-20 मिनट की ब्रेक इवन कैसे करेंगे? 8 पे कर लेना कि अगर 8 हो गया तो आप ब्रेक इवन पे निकल आए। नहीं मिल पाए। मिड बैंड ब्रेक इवन करेगा ऑलमोस्ट 10 टिक्स पे, क्योंकि मिड बैंड को थोड़ा रूम चाहिए ना। 8 टिक पे ब्रेक इवन कर, ये देखिए अब आपका नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसने ब्लैक कैंडल बनाई, फिर अगली ब्लैक कैंडल बना दी। 2-15 टाइम में हमने रखा था जो ब्रेक इवन सेम ही रखना है। हाँ हाँ, लेकिन ये मोमेंटम में निकल जाता है। मोमेंटम में तो वो खींच जाता है ना, इसमें तो नहीं खींचा ना। ये बल्कि यहाँ पे 50 अभी तो सर कोई मार्केट में जान ही नहीं है। वो बस तुक्के वाली बात होती है। कि आजकल हर कोई आज के दिन में तो बैठा है, सिर्फ देखना है कि इंटरेस्ट रेट में क्या होना है। दैट्स योर बिग, इट ऑनेस्टली मे नॉट मूव टुडे बिकॉज एवरी इन्वेस्टर ट्रेडर they're waiting on the sidelines to see. Yes, press okay. Yeah, so you're going from March to June. Yeah, yeah, press yes. Yes. अब उसमें भी मोमेंटम नहीं थी कि वो लंबा चलती जाए, वो वापस कैंडल ऊपर आ रही है, राइट? सो when you have black candles back to back to back, the word is consolidation, that it's not making a. तो टेक्निकली सर वो ट्रेड नहीं बनता। नहीं, बन भी, ट्रेड का रूल सेम है, हाँ, लेकिन मोमेंटम चाहिए SRES के अंदर कि आपने SRES लिया, उसने ब्लैक कैंडल बनाई, 4 टिक्स ऊपर दिया और आपका टारगेट पूरा हो गया। 4 टिक लेना है ना, फिर हाँ 4 मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट 2 साल से 4 निकल आते हैं SRES के अंदर, 4 टिक्स निकल आते हैं। ये याद रखिएगा, कैंडल बन रही है 4.75 पे, ठीक है, आपने देखना है 4 टिक्स निकलते हैं। जब भी ये सेटअप पीछे जाके देखे ना तो आपको नजर आएगा 5.75, 6.75, 7, 8, तो एक स्विंग आती है ना, तो 4.75 तो निकल गए आपके ब्लैक कैंडल में, तो 575 का मतलब आपको 1 पॉइंट मिल गया, 675 का मतलब है आपको 2 मिले। मार्केट तेज हो तो ये 4-4 पॉइंट में निकाल देती है। तो लेकिन अभी तो बिल्कुल ही I cannot predict which way the market will go at 9:30. doing 30-20, just doing 30-20, not 50. See, if you're doing 15 hand graph, it's going to be based on but if you're doing just 30-20, then you're doing. All right, let me give you guys Nasdaq areas. Please do not buy Nasdaq until expected low today. Don't wait for it. Expected low 19,300, 350, 340. So Nasdaq, it will break S2 very easily. The difference is only 100 points. So expected low for Nasdaq and expected high for Nasdaq, both. Nothing else before expected low, expected high. Expected low, expected high. From this point, ESS2 is okay, and from this point, ESR2 is okay. ESS2, R2 should be okay.
See, what we are talking about is SRES. Swing, reversal, exposure. Should that happen? That became swing, that became reversal. What we did was, from this point, we did a short. So we got 235. Yes. Consider लाइट बंद करेंगे 30 सेकंड के लिए sorry. All right, our daily ritual for all of you to go ahead and reply this quickly. I will check the news. Sorry, I didn't pledge. I bear witness to myself. I will always check the news. I will always place my stop loss. I will follow my strategy and not trade randomly. I will treat today as my first trading day. I will stay disciplined and not gamble. I will do what I see, not what I think. Thank you. There you go. You shouldn't be focusing on value areas more than you should be focusing on value areas. Right now, both of them are breached. Most of the treatment happen in these areas. Once they're breached, they don't work. It's the first time. डेड पड़ी हुई है, कोई सारे घबराए हुए हैं कि जिस स्पीड से ये गिर रही है फरवरी 19 से सर वन वे डाउन हो रहा है almost the how much money got wiped out, quite a bit. Yeah, so but who's gaining? The ones with who manipulate this, like the poor guy who has RESP or RRSP portfolio. Like I have 4 kids, I have invested RESPs, right? So 2024, it was a spectacular year, right? The first 2 months of 2025, portfolio shrunk. Nothing I can do. It's just because the brokers have invested into Nasdaq, S&P, and wherever. So, but somebody has ripped out that money, right? The value of it. It's gone into Vanguard, BlackRock, one of those powerful companies who can bet and move the market, right? So, We as insurance advisors, we do universal life policy. yes. Investor in the market. Yes. The market crashes tomorrow. Yes. Nothing you can do. We can't do anything about it, but there's another way of doing it, but people don't want to. True. Because every investor is kind of their own way of analyzing it, how it is. In my opinion, futures trading is one of the fastest way to go in and out of market, collect your 100. So I had, before market opens, I offered a job to somebody. Because one guy was debating a lot. I said, all right, no problem. So go open up a GFF account, put $3,000 in it. Okay, so the guy does it. Not realizing what we have put together. $3,000 I put in his account. He comes here, we hire him. $125 a day we will give you, Canadian. You will sit from 9 a.m. to 5 p.m. That's a job, right? A minimum wage job. You get an hour break, 15-minute breaks. You have a job. So you get to go home at 5 o'clock. But in those 7 hours,
any trade I ask you to trade, that money that you earn is ours, not yours. So that 3,000, we'll make sure you get 2 points, minimum 2 points. So that $100 will pay you back your salary, right? So so he's like, man, I'm sitting here. So after 3 days, his brain clicked. I'm sitting here for 7 hours to make $100. I can do this with 2 mid-bands, and I can do this with, and then he realized what we were offering. So if you have problem with discipline, come get hired by us. We will use your money to pay you, right? So that's right now, all of you have voluntarily discipline. You make 3 points, you give back 8. You make 10 points, you give back 9. When you will be working as a job for us, you will be trading, but the money is ours in that account. It's not like you get to keep that, but you will only trade for 2 points in the 7 hours. If that makes you feel good, no problem. So we can put a job offer for you ready, and then you're gonna say, my God, man, I can make $100 in 10 minutes versus they're making me sit for 7 hours. But you have this peace of mind, you have a job. And we are going to generate the money from your own money. Nothing to do that. So we're not going to pay you out of the. So I'm just trying to say is make your 2, 3, 4 points, call it a day, move on. 2, 3, 4 points, call it a day. The longer you will sit, you'll start returning those points. So anyway, that's my rant about. So in this case, again, higher low, but it gave us not 4.75. It's still almost 2 more takes, and that 1 point would have been full, right? So it's okay, no problem. You didn't have to take the previous one too. So after 9:30, you have a bit of a push because the underlying stocks, they open up. Very soon, stock market will go 24 hours a day. The true New York stock market, then you will have volatility like this 23 hours a day. Because right now, the stock market opens at 9:30, closes at 4. Because they have bounded of earnings. Because within the earning, a stock can like deplete so they have a rule. But they're trying to push stock market to go 24 hours a day, which means you will have volatility in futures too, which is a good thing. So at 9:30, stock value will start to decide S&P futures value, and then you will have some big volume. So that's the stock 124 thing. Is that like a project? Yeah, that is right now. It's being discussed seriously. So. Remember, before the market opens, can I ask you one question? Absolutely. I did read that, but it's not making sense to me. जो नीचे बार जो दिखाई देते हैं lines, like if the blue is up, that means more buyers, and red means more sellers. Correct. So right now the red is down, blue is up. So a blue line represents buyers. The red line that's called the relative strength index. So if you look at 30-20 at 6:30 p.m., 6:30 a.m., your blue was above red. Exactly. So there were so many buyers that pulled the market up. And then sellers took over and the sellers went ahead. Okay. So whichever one is on top is the ones dominating at that particular time. Okay. So we should be keeping an eye on the bottom too, or just the top? I normally just look at the top. RSI is good to monitor divergence. Okay. Because if the price went up, but the strength did not go up, so it's telling me something is not right. Okay. Right now, everything is in convergence, meaning that, but if you take a look, everything is, white line will come if there's a divergence, right? So. Okay, right now it's like so slow, stuck on one candle. Yeah, it is. It's not doing anything. So in about 5 minutes or so, we will have some sort of. So for ES guys, S2, R2 for Nasdaq, S3, R3. That's our game plan for today. हाँ देखिए आज OCO टेस्ट करें 9:30 खुल रहा है
नैस्डैक में आप किस पॉइंट पे ओसी ऑर्डर लगाएंगे? सर मैं ये कहता हूँ नैस्डैक अभी खुलेगी ना 4 मिनट बाद, तो अभी क्या प्राइस नैस्डैक की 19,760 है, ठीक है। 30 पॉइंट दूर जाएं, एक बाय स्टॉप लगा दें, एक सेल स्टॉप, सिम में टेस्ट करें आज, ओसी ऑर्डर लगाएं, बाय स्टॉप सेल स्टॉप नैस्डैक का, बिल्कुल सर उसमें टीपी लगाएं दूर का यार, क्योंकि आप खुद बंद कर सकेंगे ना, अगर वो खींच के ले गए इस डायरेक्शन में तो वो कई दफा तो 50 पॉइंट मूव कर जाती है। मैंने एसएल रखा हुआ 35 पॉइंट का, 15 पॉइंट, 35 पॉइंट स्टॉप लॉस। टीपी 50 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, क्योंकि हमें वो 930 पे स्पाइक नहीं पता ना कि उसने खुल के किधर जाना है। तो अगर आप उसको टेस्ट करना चाहें तो 2-4 दिन 5 दिन देखें कि 929 पे अपना ऑर्डर लगा दें, बाय स्टॉप सेल स्टॉप का, और देखेंगे वो कहां पर जाके, ये अलाउड है, हर फंडेड कंपनी अलाउ करती है, न्यूज ट्रेडिंग नहीं है, ये मार्केट ओपन ट्रेडिंग है। एफटीएमओ अब इन सॉरी दोबारा बात, यहाँ 2 पॉइंट मिले उसी ट्रेड के अंदर, यहाँ उसने थोड़ी सी मोमेंटम हो ना तो आपको पॉइंट मिल जाते हैं, बट एनीवे और नहीं ठीक है, लेकिन सिर्फ वो 15-10 में ना एक आध पॉइंट मार्केट तेज हो आ जाता है इस SRES के ट्रेड में। अगर ये तोड़ गई 5687 30-20 में तो हायर हाई बनने शुरू हो जाएंगे, फिर आपके मिड बैंड की वैलिडिटी बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि दोनों में हायर हाई आ जाएगा ना। अब अगर आपने बाय करना है तो मिड बैंड से बाइंग बननी शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं वेट करूंगा 87 के बाद, क्योंकि 87 पिछला हाई है ना, तो हायर हाई बनेगा तो मेरे पास एक चांस है कि अब मिड बैंड टुवर्ड्स द R1 जा सकता है। और जी 2 मिनट में OCO ऑर्डर जो भी टेस्ट करेगा टेस्ट हो जाएगा। My plan is like go home and read about those orders. No problem. सर स्टॉप लॉस 35 अरबे 4 140 टेक 35 पॉइंट लाने, टीपी एटलीस्ट 200 ला लो। All right, now we have a true higher high. It has touched night session now. This becomes night session high now. 9:30 market is open. Let's see which way, if there's a spike yet or not. Nasdaq ने spike दिया आपको, ऑर्डर पिक किया है? Not much. मैंने लगाया हुआ है कुछ। कहाँ कितनी दूर लगाया? मैंने 810 पे लगाया। 810 पे, ठीक है, अभी पिक हो जाएगा अभी। ये आपका उस डायरेक्शन में अब देखें जाता है कि नहीं, तो अगर ले गया तो या we'll figure out. आपका विक्रम भाई कहाँ पिक हुआ है पोजीशन में? 1980। अब देखें ये मिड बैंड मिस हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेड मिल गया, 2 पॉइंट ले लिए, वेरी गुड। ठीक है इट्स ओके। मिड बैंड तो बनता है ना सर मिड बैंड ठीक है, 30-15-10 पे डाइवर्जेंस है, लेकिन शुड बी ओके। डाइवर्जेंस आज ही पास होनी है लगता है। हाँ, पिछले 10 दिनों से डाइवर्ट सही टाइम पे हटा दिया था।
Pressure is up. Yes. Order fell. वो डाइवर्जेंस देख के मैं इधर से 30-20 के मिड बैंड पे आ गया था। मेरा पहला ट्रेड तो सक्सेसफुल हो गया। मैंने 30-20 का मिड बैंड लगा दिया था, फौरन देख के इधर नीचे ले आया था अपना ऑर्डर। 30-20 पे गैप ट्रेड बना और हमारा पहला ट्रेड मिड बैंड वाला, क्योंकि डाइवर्जेंस नजर आई, मैंने अपना ट्रेड मूव किया 30-20 के मिड बैंड पे। वो सिर्फ थोड़ा सा ही कम था नीचे, तो अपने मैंने मिड बैंड से उठाया, उसको थोड़ा सा नीचे कर लिया। 15-10 पे ही 30-20 का हाँ, लेकिन नंबर देख लिया ना, तो 15-10 का नंबर was 56.85. But even if you had a 15-10 mid-band, it still passed. Didn't give you a stop loss because it 8.5 is it. So that still got you 2 points from this first mid-band trade. Now everything looks good. So R2 is my number. अभी spike ही नहीं आई Nasdaq में कुछ. Because I was trailing, it got take me out. क्योंकि मैं बन रहा होगा कुछ Nasdaq में अब. हाँ बन रहा है ना, ठीक है, क्योंकि उसने आपको उसके साथ ले गया, आपका ऑर्डर पिक हो गया होगा Nasdaq पे. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक लग रहा है. थर्टी 20 पे डाइवर्जेंस है कि नहीं, लेट्स सी. थर्टी 20 का मिड बैंड. हाँ हाँ
No direction whatsoever. सर यहाँ का तो है Mhm. R1 हो गया No, not yet. R1 didn't touch. Now we have a gap trade here. It's crazy. 30-20 it touched the midband and came. Yeah. Sorry? It's way above the mid. Yeah. So I mean, look at the BBs at the bottom. They didn't go to the midbands. So that's a gap trade, right? The price went up, but your strength and everything is just stuck there.
I was in a short trade. I had that mid-band. Good. So the previous mid-band worked too. Even though the color went into green, 8.5 is the stop loss thing, and I was able to make a few points from there. ये वाला मिड बैंड लिया था रेड वाला ठीक है नहीं अब दोनों सबको लोअर लो है तब तो नीचे जाना चाहिए S1 is still valid for ES because of last time S1 got touched was 5 o'clock in the morning. So S1 is sitting at 56.57. And that's bottom of the value area as well. Is it worth to make the trade at the mid-band? Yeah, I don't see anything wrong. For the short or? Yeah, it will be short because let's see. Because I entered at 5681. 81. That's the mid band, right? That's where I've taken. Let's see. Will it break or not? I don't know. There you go. I'm done my target. Not yet. Only showed me some profit, but went back up. Oh, what happened here? Somebody bought something? Was there a news? Incredible. Somebody definitely put in a big order somewhere. Exciting, eh? This. I know. But the good thing is like with the profit trail, like profit ATM, actually like rather than taking a big loss. Okay. I'm still wondering that who put in a huge order. Like Tesla is up. Okay, Apple and all getting shared for 145 times. Now it's back into the green zone. I know. It went from a red candle to green candle pretty quick. Like in a fraction of a second, blink of an eye. I took that 1 point.
वो वापस उससे बाय स्टॉप लगा के हाँ हाँ प्रीवियस हाई से ऊपर का ठीक है. Back into R1. सर मिडबैंड लेना चाहिए अभी? नहीं ग्रीन है तो मिडबैंड ग्रीन के बन जाएंगे. R1 is coming, guys. Let's see. It hasn't hit. So this is the first attempt. It's hitting R1 for ES this morning. So 96.95. but distance, remember, R1 to R2 is so close that be ready for anything. You may penetrate it. It's only like 6 points difference. 7 points. 8, sorry. 5,700 to 5,708. एक से मिड बैंड हो गया हम देखें वो बाय स्टॉप वाला चलता है कि नहीं. One tick mid band missed. या Maybe certain earnings came. Tesla jumped quite a bit to 231. That's a big jump. अगर उसकी वो tub Apple jumped $3, so
Suck like तो हम लोग को इसके व्हाइट लाइन नीचे लगाना पड़ेगा, राइट? और हम दो एक साथ निकाल सकते हैं। previous one gave us. We're inside R1 officially now. आप R1 का ले रहे हो? नहीं यार, मेरे R1 और R2 में बहुत छोटा गैप है, और उधर R1 में आ गई नैस्डैक, तो ये R2 देखे ना तोड़ गई. R2 is better choice for, because look, Nasdaq is about to go into R1, R2. The gaps are so weak. 5697, 5700, 3 points only. First attempt maybe. So 19,900 before 11 o'clock, R2 for Nasdaq, possible. है 0810 मैं देख रहा हूँ, 8 से भी मुड़ सकती है, वेट हो रहा है. वहाँ पे आप क्या वहाँ सेल करेंगे ना, अगेंस्ट द ट्रेंड, रेजिस्टेंस. आपने वो ब्रेकआउट वाला ट्रेड लिया था, पिछला हाई रहा है. एक सवा पॉइंट लेके और ये सिमुलेशन में भी उसमें चल रहा है. ठीक है. कितने 7 पॉइंट बन गए? Nasdaq is almost inside R1, almost. Next hourly candle will happen in about 4 minutes. That opens green, definitely Nasdaq going to R2. R1 is done, Nasdaq.
19,000. तो आपका ओसी ऑर्डर चल रहा है नैस्डैक का? अच्छा, 19,845. So our R1 is officially done, Nasdaq. नीचे कितना गई है? Didn't touch mid-band quite. यहाँ मिड बैंड का ट्रेड बनता है बाइक हो चुका है क्या ना, वो मिड बैंड से ना निकल गया है। अब ब्रेकआउट देखे मनता है कि नहीं। गुड मॉर्निंग। If it breaks 5704, definitely it's going to R2. Broke. Three ticks. There we go. 1 point from the breakout. So अगर mid band miss हो जाए, breakout 1 point दे रहा है।
सारे बैठे हुए हैं, 2 के बाद देखेंगे। Because Nasdaq, if it goes to 19,000, only 50 points, so 10 points from here. Yep. So that will put us from 5704 plus 10. 57 above, slightly above R2. 860 to 920. 920 minus 860. 60 divided by 7, 8.5 points. There you go. R2 is coming, guys, soon for Nasdaq. So, which is already going to put us in ES R2. हाँ R2 में बैठा हूँ जी। ब्रेकआउट्स में आपको 2 पॉइंट मिले इस दफा। अगर मिड बैंड मिस हो गया, ब्रेकआउट में बैठ जाए। सर 5708 पे करें। मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा। पता कहाँ मैं 11-12 पे ले जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अगर यहाँ से नैस्डैक शूट कर गई ना, तो नैस्डैक अगर गई तो इसने R2 भी क्रॉस कर देना है। जो फर्क थोड़ा सा है, अब डिपेंड करता है नैस्डैक कहाँ तक जाएगी। तो 5711 पे बस स्टॉप लिमिट लगा रहे हैं। सेल लिमिट तो मैं 5711 तक वेट करूंगा पूरा, देखूंगा कि अगर नैस्डैक R2 में आ गई कि नहीं। या नैस्डैक को सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट चाहिए to get into Nasdaq R2. The 40 divided by 7, that'll put it around 6 points from here. 5706 plus 6, 5712. So there you go. We are inside, very close. Because Nasdaq wants to get into your, maybe ES will dictate. Who knows? Let's see. Can't predict anything. Because it depends on where the market bounces now from. Computer predicted 5708. Maybe ES will lead the way today. Because 5708, it already has given us about a point. 50, not yet. No turn. Because 3020 is severely overbought as well. All right, Nasdaq has left almost 20 points to go. They were in 11, 1150, 12. Nasdaq only has there you go, Nasdaq almost trying to climb.
There you go. Area is done. Done. Quite a bit of areas. Everybody should be. Good. Area is done. R2 is done. 3 points, 2 points, 3 points. Because the issue for me where I calculated this, that above 11 is Nasdaq distance was so done for the day, for the area. R2 is done and it's coming down good. By the way, if you even took 8, you got a point. If you took 9, you got a point. If you took something, you got a point. It's not something that you didn't get a point. So from 8 to 11, so 11 guy got 4 points, so 3-4 points are done. Now Nasdaq wants to truly go and test. Well, let it go and test again. Now if we get a black candle to the downside, that would be a significant one. Remember, it's R2, and we get an SRES to the downside. That's where you're... Yes. On 30-20. 30-20, not 15-10. Because what will happen this, the scenario is expected high one way, or if it gives us a black candle to the downside on 30-20, we are selling. It will I took that. breakouts. ठीक है, no problem. Mid band नहीं हुआ, breakout 1 point दे रहा है. Bit of a divergence now because remember, price didn't go up as much. I'm not sure if anybody took over R2 for Nasdaq. Not sure, but it touched 900 to the dot and 5-10 points kind of came in. R2 is done for Nasdaq. Still wants to climb, but at least gave us some points from R2. 10 points I see. 10 points, 11 points, 12 points. It's coming down now, fast. There you go. Jitin bhai got 9 points. Good. Yeah, give us a... It's a magic band midpoint, so it will have a hard time staying there, in my opinion, possibly. Another divergence. Let's see if it... मिड बैंड लिया आपने? नहीं मैंने उठाया। Okay. मैं क्योंकि वो ब्रेकआउट दूं तो उसमें मैं नीचे चल रहा हूँ, ट्रेड से बात नहीं हो रहा। Now it has climbed enough and needs a bit. 30-20 needs a retrace. It is severely overbought. If you look at the strength of 32, it went up straight 38 points. So it needs a bit of a retrace. So let's see if it will test a mid-band or not. Time will tell.
Kind of touched mid-band and gave you 2 points. Yeah, that's what I took. You took? Good, good. I just took only 1 point though. Good enough. Every dollar matters. Yeah, no, because the thing is like how it is being like, so volatile, like up and down, 15, 10, 15, 10. But because now we have a divergence too. The white line going through the 1510 line, that's called the divergence line. The trend may change. Will it change? No. So if somebody was on a payroll today, I would have taken 2 points, and now I would make you sit until 5 p.m. Just sit there, and I'll pay you $125 a day. But the money you made on your GFF belongs to us. I need a blast to the downside fast so it can create some liquidity, maybe go back up. So good support now could be R1. Remember, it's coming from R2. If 3020 takes a retrace, you have a possibility to go and bounce 56.97, maybe. Let's see. Time will tell. So, sorry? R2 ने बचाया क्यों? पहले क्या गलतियां की? डेड मार्केट में अच्छा। पिछले दिन तक अगर हम कैश अमाउंट में $200 ऊपर चल रहा है तो ओके है ना भाई? तीसरे दिन में अगर हम कैश अमाउंट उसमें $200 पॉजिटिव में दिखा हाँ ठीक है, फेस इज ओके राइट? इट्स फाइन। एक क्वेश्चन है, ये देखिए दिखा रहा है 103 तो बंद किया, लेकिन पीएनएल में आ रहा है। नहीं सर, आपके कमीशंस भी तो अच्छे खासे कटे हैं, तो आपके पर रियलाइज ये आया क्योंकि हर माइक्रो का $3 कमीशन भी तो है ना। Still one doesn't want to go. Doesn't want to go down yet. Still testing. MES पे का you can change it. You are not in your plan. Yeah, read out the ये करो सिंपल है। no Try this by वाइट लाइन से नीचे लेना पड़ेगा। ट्रेंड के साथ तो बाय स्टॉप लेना, बाय लिमिट ऊपर Sell stop. Let's see if there's a breakout on 5607. Should be, I think. My opinion. It should now. No. It's not that. Futures. Thank you. Then everything is like that. You can, it's better not to have to do that. It's gonna slow down with that. That's when you might क्या कह रहे हैं?
नहीं हॉट आप कंट्रोल सेंटर में जाएं, किसी अकाउंट के साथ कनेक्ट करें ना। अब देखिए एक सेकंड, नहीं बैठे विक्रम भाई 1 मिनट देखेंगे, सॉरी एक सेकंड, सॉरी टू बॉदर यू। ये कह रहे हैं कनेक्ट नहीं हो रहा, मैं एक ट्रेड में हूँ तो सॉरी। नहीं अगर मिड बैंड से सेल नहीं है क्योंकि अभी दोनों ग्रीन है तो वो अभी मैं सेल नहीं ले रहा, मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ 56 706 से। और देखिए 900 से आई है 77 तक, ऑलमोस्ट उसने आपको काफी पॉइंट्स दिए हैं, बट ईएस अभी ब्रेक नहीं कर रही, ट्राइंग टू गेट सिंक्ड। R1 का बॉटम, क्योंकि अगर यहाँ से ये ब्रेक होती है ना, मैंने देखना है इसने बॉक्सेस का बनाने हैं, मैं फिबोनाची बॉक्स का वेट कर रहा हूँ। नहीं अभी रिट्रेस में बनेंगे, फिर 30-20 आई एम वेटिंग फॉर द, because remember Nasdaq went to R2 coming down to R1, so R2 done sir, R2 done. Nasdaq is going up, but it's not pulling. Nasdaq went down, ES didn't go down. Now Nasdaq and ES almost getting synced into the same area. I guess it's testing the R2 parameter every time. Yeah, Nasdaq wants to go back and test R2. Let's see. 5711 के पास आके जो है वापस आ रही है। No, they're kind of synced. Nasdaq and ES.
welfare trade. नहीं मैं हूँ लेकिन I can talk. It's end of the day. For example, like remember you talked about like this trade of account, right? Yes. So the 1500 has to remain 1500. No, it doesn't have to. I mean, that's your maximum allowance to fail. Okay. No, but let's say for example, like on the watch what about if you go 2650, right? 26500. Yeah, that 15 in that time doesn't matter. So that one can be. I've $1. seen people, they've passed with $1,000 in it. That's okay. Okay. That just gives you an ability how much you can lose. Most people focus on dollar amount on the cash. That's the wrong thing. All you need to know is I have $1,500. If I lose 500 tomorrow, unke saath jo thoda kal hua. Same thing. Forget about what is the dollar value. That's just for target. 26,500 you want to get down today. Let's say you made $200, for example. Right now it will say 1,700, right? At 6 p.m. it will reset back to 1,500, right? So main thing is that you have to make that 25,000 to 26,500. 26,500. So Without any going below 1500. without blowing 1,500 total. On a single day. On ever, not a single day. It's not like you blow something and it will reset tomorrow to 15. No. Let's say today you took a loss of 300. Tomorrow you will open your trader weight. It will show you have 1,200 available. Okay. Now, if you make 300, it will cover that first. Okay. So any loss you make, it covers that And it first. will reset tomorrow. 6 p.m. tonight. Okay. But that's not what I mean to say. So let's say, for example, right now in my loss is just 1350, and Yeah. on the right side said 148. Yes. So that 148 So will be added like a tomorrow. Not at it. That's done live. Okay. If you only have 1350 available, that's it. So if your drawdown says threshold 1350, that's what you have available. Now, the more you will make 150, it will go cap max 1,500. So every morning you get to see what your available is today. Now, yeah, if you were in profit, तो कोई बात नहीं, that's fine. But that's not technically possible. You will not be able to go up there without a threshold, right? So At the end of time, it doesn't matter. No, it's wants to go down, but Nasdaq is almost down to R1 again, but ES is stuck there at R2. So Nasdaq. Does it make sense to keep the like another step in the stop limit at 57.11 or no? 57.11 what? The high of R2. Buy stop? Sell limit. No, R2 is done. You don't sell again from an area that's already done. Yeah, because it has crossed the R2, right? Yes. So now if I want to put the stop limit like a sell limit, it's going to put the expected high. Expected high. Far from here. ES is having hard time. Nasdaq climbs, ES goes back up. When Nasdaq falls, ES is not in sync today. In the downside. नहीं वहीं घूमी जा रही है. It didn't even break 56. It just made a double bottom. Let's see if there's a. Isn't that super annoying? No breakout trade.
Mm-hmm. When you're at the super area, right? If you want to watch you live at 2 o'clock, how to? I won't be here too because I leave around 1:30. So because every day, Monday to Friday, I'm here until 1:30, maximum 2. I will keep my stream on until 2:15 today. But because I want to see what's going on with the interest rate, so it will be exciting to see. Okay. Like for example, like I don't want to be the real trade, but I can just try in the. Yeah. Go sim and go OCO and just enjoy it. At 1:59, put a place like as the video I posted, 30 points this way, 30 point buy stop, sell stop. It will rocket, take you in both directions, one of two directions. So the interest rate spike at 2 o'clock, and then FOMC statement, they're gonna start speaking at 2:30. So from 2 o'clock to 4 o'clock, you won't be able to put a trade in. It'll be lucky because I've seen 1,000 points drop in a day too. I've seen it all in terms of. Quick question. Mhm. This is the simulation or demo, right? Mhm. By mistake, Mhm. we leave the trade open after 4 o'clock. Doesn't matter, but try not to. Same Of day, course, yeah. Because we don't want to make it a habit, right? Yes. But just in case, right? Yeah, you shouldn't have any problem. As far as we make demo or similar. Correct. Thank you. अभी मॉर्निंग में फिर मेरा वो रात का वो खत्म करके वो कवर किया और फिर बस ठीक है मुझे कल बताया था ना वो सच में मेरे काम कर गया मैंने वो बताया था ये इसका पता है 2 यूनिट के साथ ना वही लगा देखा स्लो स्टडी या ठीक है लगता है पैसे भी कम खाए तो गाड़ी भी कम पेन भी कम हो गया टमाटर ट्रांजेक्शन की जा रही है $3 million ऐसा करेगी ठीक है जाती है एक क्वेश्चन Mhm. going away for 3 days this weekend, right? On the back on Friday. Yeah. So even if I connect to the hotspot while I'm on the road or something, Yeah, it should not. I have twice. There's a video on TikTok where I posted from the airplane, and I connected with the Wi-Fi from Starlink in the plane, and I was able to trade. No problem. As long as you can send your orders in and back, no problem. Because of course, I'll put it like the ATM is Yes. for sure, just in case if the connection gets lost. Correct. And most likely, like in a couple of hours, I should be in a zone. Where Correct. I can be connected to the regular Wi-Fi or something. And the zoning doesn't matter, right? If I'm on Ontario or in Quebec. Good luck. all the way to you. Thank you, Rahul. Take care, Ji. Best of luck. ठीक है Okay, good luck. That mid-band worked. कोई बात नहीं, अभी मिड बैंड कलर उधर चेंज नहीं हुआ था, तो डोंट वरी, ना लेना। अपने वादे कसमें अपने आप से किए, मेरे से नहीं किए, और ना ही मैं कोई जज हूँ आपके। दी
नीचे आ टूटे ना रेजिस्टेंस हो रही है बहुत। बहुत सख्त मैग्नेट की तरह फंसी हुई है। तो अभी वैल्यू एरिया हो चुके हैं, वैल्यू एरिया का डल रहा है ना, हाँ, बता दूं वैल्यू एरिया का खाना खत्म हो गया। व्हाट्स लेफ्ट ऑन द टेबल इज एक्सपेक्टेड हाई, एक्सपेक्टेड लो. Go and put in your expected high, expected low trades, please. Buy and sell. If the market does go end up there, it's not news trading, it's an area trade. So it's not going to happen exactly at 2 o'clock, the market will go. But maybe 2:05, 2:06, 2:10, these are strong areas, high and low. So do an OCO order of expected high, do an OCO order of expected low, buy limit, sell limit. So whichever gets picked up, one will close. फॉर एग्जांपल 57 50 to 57 बिल्कुल बिल्कुल दोनों जी तो क्या कौन सा नंबर देखिए, मैं इधर लेके आ रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर गैप बहुत बड़ा है, तो मैं 5800 का देख रहा हूँ और नीचे वाली साइड पे देख रहा हूँ 55 86 इज ओके। ठीक है, अब यहाँ से ये ऊपर वाला कौन सा देख नहीं सर, एक्सपेक्टेड हाई इज 5750, सॉरी, अच्छा 5750 to 60, but put your stop loss above 65. At 65 you want to exit, so that means your stop loss would be 15 points. So if you decide to go 60, 15 बन जाएगा ना, क्योंकि आपने 50 से एंट्री ली। हम कहते हैं अपर रेंज से 5 ऊपर लगाएं, क्योंकि अगर अपर रेंज को टच किया तो अपर रेंज 60 है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो ये आप देख लें, आपने मिनी लेना है, माइक्रो लेना है, एवरेज करनी है, और इधर लगाएं 86 पे बाय एंड 76 minus 5, let's say 85 even, 55 85 is 86 85 though, and then you would put your stop loss from 85 down to 15 points below your stop loss, because right, it is quite a bit far towards expected low though, and I don't think it's going to. I still think more chances are basis pressure is up and interest rate cuts down. It could go to expected high. So from expected high, I don't need to trade per dia anymore. I have qualified to pass. That's good. एटीएम जो है वो ट्रेलिंग के साथ लगाएं। हाँ, आप लंबा खोलें और खुद बंद कर दें। सर काम डेड हो गया। You don't have an active account. Oh, you do. Give me a second. Press OK. And it says accounts. Good. This one. This is good. You passed.
Mark, mashallah. Question, you passed, you have full threshold, everything is good. I have to ask you two questions. Any day you made more than 450 in a day? Yeah. How much you made? I made 2 days. I made 460, 480. Okay. How many days have you traded? I want you to go in this account step by step. 14 Okay. days. Let's pick up this. Did you trade today? No, Okay. Did you trade yesterday? no. 14. Okay, 14th. So that's your 314. So I want you to write down everything because then they will audit you and I don't want you to get declined. So first day of, one day you traded, you made 314. So you have passed in my eyes, but let's see if you have passed in their eyes. So on 14th you traded and you made 314. 314. Yes. Let's do 13th. You traded, you made 233. You're good. 33 after commissions and everything. Third day, 12th. You traded, you made 403, not 450 because of commissions. You're okay here. 3 days. 11. You traded, you made 558. Now that's going to be a problem. I'll tell you what you have to do. 58. Zyada ban gaya. 10th. You traded, you made 396. You're okay. Day number 7th. So that's all. So you only trade. So now you have the following: 6th, you didn't trade. 5th, you didn't trade. You did trade. You lost 227. Okay, added 227 on this day. You lost minus, but counts as a trading day. On this day, you lost $460 and you closed your account. I mean, you stopped trading that day. 467. Good. And this is the same. And the one day, 8th day you traded 353. What I like about these is in a losing day, you did shut off your computer. At 267, you decided, you closed Ninja and says, I'm not going to trade this account. And one day you stuck to discipline. You took a 467 loss and you said, I'm not trading anymore. This is really impressive to see that you're not ripping your whole account. And any more days? Saturday doesn't count. 27? No? Not to set. I started one. Okay. So you have traded 8 days. Good. You have traded. Every single thing is only issue for me is day number 4. You made 558. So what are we going to do about it? 1 second. 558 divided by 30%, 1860. So your account balance is what? What is your account balance? Your account balance is 26,565. So 1860. 25,000 plus 1860. So write down this number. 26,860. Right now you are at 25,560. Minus 26,860. No, 26,565 minus 26,860. You have to make $300 more. No, you still have a 4, 5, 10, 15 days, doesn't matter. But now you have a full threshold. You have a full bucket of 1,500. Only thing you have to make is $300 and you will go into round 2. So that's your target. So this number now needs to go to 20. Sorry? Not more 3,000. No, you don't need to make 3,000. Now remember, just 300, 350, because remember, the only reason I'm pushing, they will push you higher. In day number 4, you made $560. No, they don't deduct. They raise your target. You started with 1,500, but in that one day, you made more money. The target was 450. 450. So you went $100 above the 550. So that $100 pushed your target to 1,800.
So that's why I say in the evaluation, there's no need to work extra. Anyway, it happened. Had you texted me that day, I would have told you before 6 o'clock, just lose $100, and you can lose, because remember, there's no real money, right? So now this is your target. You have a knock on wood, touch wood, you are, yes. Yes, that's fine. So what I'm saying is touch wood, everything is good. You only have to make 300 and you have 1,500 available. Another question here. So now I wanted to practice for stocks. So you told me when you wanted to use a Ninja Trader, you will need connection for the stocks trade. Yes. Finish this and I'll give you the website. Yeah, no problem. But your target is only $300? Not because you didn't finish it. You just made extra. That's it. Continue doing what you're doing, brother. Congratulations. सर 2 बजे 2 बजे नहीं 2 बजे interest rate forex factory US only, and I'm not in any trade whatsoever right now. This is going to get suicidal. Take care, जी. मैंने आपको एक नंबर दिया था 5697 का, वहां से बाय करना था 2 पॉइंट के लिए, बॉटम ऑफ द R1 था. एनीवे चलें, अब हो चुका है वो, दोबारा ना लीजिएगा. बिल्कुल खेलें, उसका रूल कुछ चेंज नहीं होता. जी जी सर. सर आपने कौन सी कह रहा हूँ सर, आपका टाइम जो है ना 11 बजे है. 11 बजे है, एक सेकंड, 11 बजे तो नहीं है फंड्स रेट. समथिंग इज रॉन्ग. देखें वहाँ टाइम का कोई सेटिंग ना हो. ये इंटरेस्ट रेट आता है 2 बजे 2 PM. अभी डबल चेक करते हैं. नो प्रॉब्लम. तो फिगर
ठीक हो गया सर वो टाइम का मसला No. इसका संडे टाइम Midman चल गया. एक कितने रहेगा तो You traded today already? Okay. लेकिन 2 पॉइंट दिए स्मार्ट बैंड ने. Plus all interest charges, expenses. I gotta sign some documents. My per deal went into live, so I have to double check these. Yes, sir. So I was talking to the manager with this. So we should be trading in micro, right? As compared. You're brand new, straight in ES for now. Because micro, you will not get, you're like, man, I'm making $1, $2. It does. So for a simulation account. I joined this place about 10 years back. Okay.
I was on Ninja 7. 7. I did it for a while, but things were very different. Okay, at that okay. time. Because back then And, you were playing with your own money, right? It was, So number one, it was own money. Number two, when I speak with Mohammed, Yes. at that time, uh, the support was not very clear. yeah, because And now it has Changed I've seen it significantly. has evolved to a different level now. So now it's a different thing. So I know like where to pick up the trade, how to do it, and that I've been doing it. okay. So some days I've been making 3, 4, 5. Some days I've been going minus 4, 5 as well. So that's what I was just wondering, because I was talking to Vikram. He said no, go on micro. Let me explain you on the board here. The difference between micro and mini is the 10th of the trade, right? First, let me solve this way. What's your goal? Like, how much money do you want to make a day? So I would say between 3 and 400. 300. Have a seat, no problem. So we have defined a goal. You want to make $300, right? You think 300 is reasonable. Now, second goal question: do you want to do this on your own account, or do you want to do this on a funded account? I think we go to the funded one. Funded account. Now, funded account has a deadline. So if you today took a, like, so that gentleman, he failed 2 funded. This was his 3rd attempt. Not like, but now he understood the software, where to buy, where to sell. And I just did a whole ledger quickly before he applies. He traded 7 days, 8 days. He traded 8 days. 2 days were negative days. So one day, so from 1 to 8, there was like day number 4, he lost $450, and day number $270. So first, he's given $1,500 in account, right? So I'm just trying to make your question elaborate and answer it in the best possible scenario, whether micro or mini. So you have $1,500. Let's assume you paid how much? $50 for it, because that's what the cost is for the thing. Now, in order to finish 1,500 in a micro, it is incredibly difficult because you have 30 days. They give you an exam. Exam is 30. He didn't play micro. You cannot, unless you may be playing 5 micros, because how is the micros differences? Let's do an ES. $1 of ES is $50 of futures, which is 1 point, I call it. So 1 point moves up or down, you will lose or make $50. In a micro, $1 becomes $5. Okay, 10 times the risk, 10 times the reward, right? So in this case, if you go with the funded account, had you invested your own $1,500 on a GFF, I would never ask you to do my mini. Never. It's your own money. You know, $1,500, if you take a trade, no problem. Even it's $2.50 on a commission, but pick it micro. When I joined Daniel 4 years ago on a radio station, we did micro only. Why? There was no funded option. And then, you know, we got so good at demo. 2 weeks later, we tried the same demo. We went into mini and blew the account. So a lot of Ninja 6 and 7 users have bad memories because they weren't able to learn this software that quickly and went into the real account and started trading ES, and then big losses occurred. And so हमेशा मैं कहता हूँ 4 गालियाँ पड़ती थी या मुझे ये डैनियल को सॉफ्टवेयर का पता नहीं था ट्रेड कैसे डालना, लेकिन गलत डाल रहा था. Anyway, scenarios have shifted slightly. Impossible for you to finish $1,500 target with a micro. That's just not going to happen. If you even took 5 micros, it will take you a couple of months. So either you spend 2 months doing this, which is okay. 2 months you can do it. $50 a day, you'll be able to do it in about 40 days. If you put a target together, are you able to now? The third thing is you have defined a goal. You want to do funded. Now tell me one last thing. Are you able to pick up 2 points a day? No problem, right? 2 points is, let's say 2 points, whether mid-band, whether gap trade, whether divergence, area trade. Today,
I told everybody R2, sell, make your 2 points, right? So you have answered the questions. 2 points is okay. 2 point is an easy thing. Now, 2 points in ES is $100 trade, right? It's a very, very easy trade. We give you a written guarantee. You will make $100. And I don't know if you were listening, I do a comparison of a job in the morning. Somebody came in and got a job from us, and I paid them $125, but I made them sit until 7 o'clock. They left after 3 days because I said, put 3,000 in GFF. I will tell you when to trade. 3 days, we made $150 each. 3 trades, 1 point, 1 point, 1 point. He came 9 o'clock, he sat until 5 o'clock. He can't trade. He's like a slave now, right? Can't talk. He's so miserable. He's walking, he's talking. He's like, what am I doing? I'm like, that's your job, right? End of the day one, we gave him $125 cash. Day two, be minimum wage, right? $18 an hour, 125. Day one, we gave them 125. Day two, we gave them, but how many trades we took that each day? 2 or 3 trades. Where did we get that money? From his GFF account, right? So remember, 3 trades, he was helping make himself $150. So that's called a forced discipline. I'm going to put you in a job environment and being able to do it. So 2 points, you have agreed 3 things. I can make 300. I want to make 300. I can do funded, and I can make 2 points. If you took 2 points every day, this exam is only going to finish in 15 days. 2 point लेने हैं यार, हमने कौन से 50 point लेने, right? So 2 points a day, if you're able to do and if funded, yes. If this was your own account, now when you go into round 2, yes, I will ask you to switch down to 5 micros, 3 micros. Today I completed my per diem. I'm about to get my driver's license, and I'm about to go live account. Took me 8 days to do it. So all micros. At worst, I had to do an average on 5 micros to 1 mini to do it. So take a funded, play with minis, but don't go like, if I made 3 points, I want to return 8 points. I want to make 4 points, I want to return 12 points. So 2 points, if they're easy, you know where the mid band is, gap is, divergence is, area is. Put 2 points. These 2 guys sitting up front, that's their 3rd day. Each of them have more than $300 in the account. That's it. And they will eventually pass it and get into the. So if this was your own funds, never mini. But because you have a 30-day deadline, you have to get it. Otherwise, they'll charge you. Stay with mini. But the moment you go into the live account, the 2nd round, then micro. Micro has a really, really great power, but round 2. Otherwise, you will never be able to complete an account with a micro. So just another question here. Yes. So let's say the target is 2 points, and let's say 2 points is, let's say, $100. $100, yes. And if we are playing, we have a stop loss. Yeah. Stop loss for $120. Let's say $100 stop loss. Yes. And if I pick up 3 trades, like mid trades, like mid-pen trades, and if all of these go against me and they kick me out after 100. He stopped his day at $250. So the thing is, should your target now be No, getting to doesn't change. That doesn't change. If your 3 trades have gone against him, at one point he shut off the computer. I'm looking at his trades. Like I can read, he passed today, right? So first day, he made $314. I went through. 2nd day, 233. 3rd day, 403. 5th day. On 6th day, he lost $227. So it means something didn't go against him. I mean, something went against him. He shut it off. So he's not trading off below. So you're not going into revenge trading mode to go recover. So we need to put a So negative target. yes. So most companies, when you are hired like a hedge fund manager to manage, they have a daily loss limit. Otherwise, they won't hire you as a trader, because how much money you want to lose in a day? Take Profit was one company was saying, we have a 10% or 50% of your account balance, 30%.
So what is your account balance? Let's say 1,500. If you have managed to lose 50%, that means 750. If you've lost like 30%, that means 450. So keep it, say, hey, if I today lose 30% of my capital, I'm leaving. Right? So now also like to, because you have to start treating this as a real money. Why? If you opened up an account with GFF and put in $1,500, to which point would you let it drain in a day? You have a daily loss limit in a mind too, right? So a good trader sits down. I'll tell you, on my pro account yesterday, I was down $242 dollars, right? And my limit is around 287 because it's a $50,000 account. I have a $2,000 threshold. If I lost $300 in a day, I'm calling it. I'm not trading, meaning it's not going in my favor, right? So market shot. The moment it opened up, it went to expected low. Tried to do a couple of area trades because yesterday we didn't have an area. S1 failed. I closed at minus 242. Today I recovered 4 times more. Everything I lost yesterday plus $200 I recovered. So the day he recovered, so the next day he comes back, day number 7, 8, he recovers that. So what I'm trying to say is, even though you have an upper limit to make 2 points a day, down limit has to be $300 or 450. I'm calling it. Otherwise, the account will get. Majority of the traders will go into recovering that 2 points again, and then they don't have a bottom limit. You know what the bottom limit is? I'll wait until my account is blown. It's only $50. It's okay. So that's a great example of a discipline right here, who took that trade, and it says, you know, I have to quit. I also like to share this study. Go on superareas.com. Now, sometime on a radio station, if I get more time, I talk about this person all the time. Okay. There's this person. If you can click, it says the study. Now, quick backstory is he came here. He didn't want to sign up for a program. So Daniel sent him to our other office where we charge subscription. So same thing you're getting, we charge $300 a month for it too. So a lot of people who can't afford that much big investment, they go with a monthly subscription, but that's more expensive on a longer term. Anyway, look, he has been trading. Look at his trades in January. First day, he made $112. This is to pass your exam. How many number of trades? 3. Second day, Wednesday, 150. Have you seen crazy amount of trades? No. He was able to finish the trades in 11 days. 2 points, 3 points, 3.5 points. Yes, there is a good day if you have a thing area, maybe 2 points, 2 points, 2 points. So your average has been coming 3 points a day. यार 3 का इतना तो मसला नहीं है कि हम 3 भी ना उठा सके. होता ये कि 3 हो जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 3 से 7 के चक्करों में -5 घर पे जाते हैं. फिर कहते हैं यार ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ग्रीड आ गई, आप सर्कल में फंसे हुए हो. Right? So this is an example. 11 days of trading, and most people who go consistently, your curve, you know what Perdia looks for you is not a curve like this. They don't want to see. No person wants. They want to see. All right, you went up, you went down. You're building your portfolio slowly. If you put a $5,000 in your real account, would you let it drain until 5,000 is gone and then stop trading? You're like, all right, 4 or 5 trades are not going in my favor. I gotta maybe a different approach, and then call it a day when a certain things. ठीक है, ये अच्छी बात है आपका. हाँ है 3 पॉइंट की स्टडी है. अब ये देखें, ये मिड बैंड है. अब मिड बैंड ट्रेड है ना, यहाँ से 3 पॉइंट हो गए, बंद किया, चले गए. हमारे पास लड़के हैं, आते हैं ऊपर चलाते हैं दूसरे ऑफिस में, 9 बजे ऑफिस में आते हैं, 9:30 10 बजे तक अपना $150 लिया फंडेड में, बंद करके जॉब पे चले गए. मैं नहीं बैठना, इसके सामने बैठना थोड़ी है. मैं तो मजबूरी है, मैं 1 बजे तक ट्रेड, 11 बजे तक आपके 3-4 पॉइंट आप लो,
और घर चले जाओ यार। अब वो फिर अब इतना केपेबल हो गए हैं कि वो अब वो मल्टी अकाउंट्स में खेलते हैं, 3 पॉइंट इसमें, 3 पॉइंट इसमें, 3 पॉइंट इसमें, अब वो कॉपियर लगा लिया है। तो गोल आपका 2 पॉइंट है। कॉपियर लगाया तो okay, that's one. That will, 10 accounts will get traded with 1 click, 5 accounts will get traded with 1 click, right? So that's the benefit of that. Yeah. So I think, so even if you, let's say if you go down 300, I'm just quoting that. Yes. Next day if it's but if You make still, it 300, no, it's okay. If you are able to seeing a good setup, then I'm not saying stop it at 2 points. What I'm saying is, if sometimes one mid band can give you $300, right? This is another mid band right here. So if you take a buy here and goes up, you're done your 300. 30-20 setup is coming, guys. 30-20 setup is coming, because now you have 2 blues and a black. So is there a difference between trading between both these types? Okay. 20 and Some users, beginners, we ask you to trade this chart, 15-10. And we only ask you to put, let's say, if this is green and this is green, think of buying. Mid-band trade, all we ask for beginners, as you get a little bit more advanced into it, what did I point out in this area is the following. This is a swing, right? This is a retrace. Got it? Swing, reach. Right now, we don't have an extension. So this trade is called SRE equals S, which I keep saying in Daniel's first lecture on a Saturday. About an hour into it, he starts making higher high, higher low, higher. And then, so this is a higher high. You have a higher low. But then you have a lower high, which means the price could change the direction. So this is what I call an SRE setup. So those that are trading this, they're not taking a mid-band trade. What they will do is they will sell after the black candle here. If there's a black candle to the downside, they will enter the trade and go with the, so they will do something called the sell stop. So they will do a sell stop here and they will do a buy stop here. Because right now, price could make an extension and break this 57.13. where are we doing the sell stop? Sell stops are, you take this number, 5706 minus 8.5, because that's where the black candle forms, and you will do a sell stop here. Because there's a mathematical calculation, where is the black candle going to form? So you have buy stop is a breakout trade, meaning that if it breaks 57.13, more chances are it's going to continue going up. However, what if it doesn't? You will have a sell stop. So this is called an OCO order. You would go in, place a buy stop and a sell stop, and hopefully one of those 2 orders will pick up. And so we won't do the mid. There is no mid-band. Like, so if you wanted to do a mid-band, you would buy right here around this line. If you want to do a mid-band trade. Yes, you can do a mid-band trade, but there are 10 ways to trade this software. Mid-band does give a better. No, the highest is area. Like today, I said sell from R2, the support and resistance method, right? So when we join, Daniel gives them manually on a paper. And advanced now, it all gets printed. So today, if you log into your super areas and you looked at your areas, the R2 had a number. Give me a second. So look at this. So computer predicted that by these 2 numbers, price will go down. So every day, computer predicts certain movements. So you can already put a. Yeah. So when this was coming here, I asked everybody, because I'm doing the analysis. I said go towards 11 today, because Nasdaq is a little bit far. If Nasdaq gets into R2, price will be around 11 or higher. So if you took 11 or not, even 8 you made a point. Right? So these are called area trades. Area trades, you sit and sit and sit and sit until a number comes. There's no trading until a number comes.
You're not looking at a mid band, magic band. You're just silently sitting. So now the next number I asked everybody, hey, if price goes to this, sell limit. If price goes to expected low, buy limit. So these are area trades, nothing to do with any other studies that. So in that case, since you rejoined, I want you to please, right here on the study, you have 14 different methods. And I've done the area. If you click on it, it actually takes you to Daniel's pictures and a video explanation. It's a 12-minute video telling you how to trade areas. Then you want to know mid-band and divergence, SRES. So pick and master one method. The top three are area, mid-band, and third is SRES. These generally will give you a few points. So areas will be the highest. Like area is once the only reach. only it reaches the point, and so you're kind of chit-chatting and says when the area comes, you will do an area trade, a zone trade or a level trade. So that's why the picture shows right here. So all of you will have this picture. Every morning, computer predicts 8 areas, and I highlighted it all, and I said, look, all the way from expected high to extreme high, both level tells you, hey, and look at it, it does bounce within it. So if it goes here, so right now we are today waiting for expected high. So I will go and place a sell limit order there and wait. Of course, I will put my stop loss in case price doesn't stop. You Sell limit is there, so because we know that is going to bounce down. Yeah, so the way easier to explain, which Daniel does it too, price will never shoot up or down in anything. And yesterday I had a good example. We were chatting temperature. Look how temperature is changing. Makes a lower low, slightly lower high. Lower low, -5 goes up to +5. -2, +4. Eventually, it will start to make higher highs, higher lows. High 18 degrees, 7 degrees. 11 degrees, 4 degrees. So now no more negative lower lows are gone. Like finally, when we get into March, trend has changed. So if you took these areas of price, weather would work the same thing. House pricing works the same thing. Every single thing in life, price never goes up and down in a single line. It goes up like this, even though it's coming up. If it's going down, it never goes in a straight line. It gives us some rebound points. So this is what is our R1, our R2, our R3, and then R4. Same thing. Which point it has fallen enough, oversold, that needs a bit of a retrace. Which point here, which point here. So if you wait for these, most amount of money, because you can wait and get quite a bit of numbers. So, but this requires the ultimate patience. Sometimes I would wait until 3 o'clock. Sometimes that same expected low is coming at 6 p.m. Nothing I can do, right? So, but a basic user can come in from 9 to 11, make their 5, 6, 10 points, and देखें सर कैंडल बननी शुरू हुई. अभी देख लूं. या अभी थोड़ा सा वो सेटअप आ रहा है तो sorry yes. Okay, once you're done with this, if you could just show me once again on the super areas where to see those areas. Yeah, sure. Click log into super areas. Okay, 1 second. So that mid-band worked from coming from higher high. अभी हो गया जी, 1 पॉइंट तो दे रहा है आपको.
सर हो गया ट्रेड आपका 1 पॉइंट तो मिल गया ऑलमोस्ट। चार दिखा था सर, वो टिक के दिखा के ऊपर भाग गया। नहीं अभी बंद नहीं हुआ, 34 टिक्स तक बैठ सकते हैं आप। हाँ वो तो नहीं आई नो लेकिन 8.5 के बाद 9.75 तक गया है, एक सौ ऑलमोस्ट 5 टिक्स गया है। देखते हैं अभी आ जाएगा, सेल की तरफ है। पिक नहीं हुआ 4 टिक्स चार अब टिक देखे थे लेकिन टिक हिट नहीं हुआ। अभी देख लेते हैं। आ रही let's see if it touches 15-ton mid band and comes down. $9.75. अब इश्यू सिर्फ यही होता है, यू हैव टू सिट इन इट, मोमेंटम से तोड़ती है कि नहीं। 8.5 to 10.5 तक हमारा है। हो गया जी, डन, ट्रेड इज डन। 2 पॉइंट्स ये सेटअप आया था, 2 पॉइंट मैंने इसीलिए भाग के गया क्योंकि मेरा वहां बाय सेल स्टॉप लगा हुआ है। अब यहां से आगे ग्रेवी है, कुछ लोग 8 पे ब्रेक इवन कर लेंगे या 4 पे ब्रेक इवन कर लेंगे और फिर ट्रेल शुरू कर देंगे। सर मिड बैंड से, लेकिन पहले लोअर लो बन लेने दें। वो जब तक उसने 5602 रखा हुआ है ना, तो उसको बन लेने दें। ये SRES के आपके 2 पॉइंट्स मिल गए, फिर आपके मिड बैंड चलने शुरू हो जाएंगे प्रोडक्टिवली। अब इसको गिर जाना चाहिए यहाँ से, और एटलीस्ट मुझे इसको कितना पॉइंट 96 5 पॉइंट और मिलने चाहिए मुझे। इस बार yeah no you have to look at last 2 moves. You have to look at last 2 moves. Am I in swing, am I in retrace, or am I in extension? You can look at the swings. If it let me explain it. If based on higher highs and higher lows, you can see if this is a swing or retrace or extension. Okay, sir. Take care. So only 11.75 didn't give us big enough. So नहीं वो हायर लो बनाई है, हमारा सेटअप तो आके खत्म हो गया ना, चला गया।
after the Demo. I think it can still come down now. It's starting to make. Okay. strong resistance for the S&P. All right. All right, let's see. Go back to R2. Nasdaq is gone above. Okay. Is it must both of them come from higher high or It's better. If it's better if both are higher high. green? This is green. Yeah, yeah. Higher high. This is not higher. Yeah. If it's almost as higher high, but if it comes both are higher high, your probability is higher. Yeah, yeah, at the buy. You will bank away. चलना चाहिए higher highs हैं. So you were able to find these? Yes, I was. Okay. Thank you, Sanjeev. We'll see you tomorrow. Take care. Ji. Enjoy.
It touched midband? No, not yet. No, Kind of went back up. that's been the question. Breakout करोगे तो अभी नहीं बनता. That's license. Divergence on 1510. Eight three six four two four. हाँ जी बताएं. जैसे बुलनॉक्स का अकाउंट है जैसे लिक्विडेट हो चुका है ठीक है तो अगर उसको मैं नेक्स्ट मंथ जब रिन्यू होगा तो दोबारा इसमें ट्रेड कर पाएंगे हाँ जी बिल्कुल वो रीसेट हो जाता है ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सेम प्राइस 50 15 में 15 हाँ 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 इसको रखें 15 में जा रही है. Nasdaq is back into R2 very close.
All right. Four-hour candle, 12 o'clock. Sorry, guys, nothing to say. There's nothing happening. So I cannot.
R2 again. Full candle back into R2. ठीक हो जी सर जी ठीक है कंफर्टेबल के बैठ और तो 20 to कौन सा movement करना चाहिए 25 का क्या चीज? सॉरी, movement किसका पकड़ना चाहिए 30 20 लार्ज ट्रिगर्स दोनों ही ठीक है, मुझे कोई मसला तो नहीं लग रहा। एक पॉइंट का ही फर्क है ऑलमोस्ट। वहां देख लें, अगर रिस्क देख लें। 30-20 का जरूर चलेगा एटलीस्ट, क्योंकि सब ग्रीन नजर आ रहा है। लेजेंड डे 1 से ले रहा है, लेजेंड जीएफएफ डे 1 से स्प्लिट ले रहे हैं। हाँ, एपेक्स ले रहा, एपेक्स नहीं लेता 25,000, लेजेंड डे 1 से लेता है। हाँ, सिर्फ उस कंपनी का लेजेंड्स। आप रेडी होंगे तो आपको लेजेंड का फॉर्म दिलवा मैं अभी आपकी परफॉर्मेंस चेक करूंगा, ठीक है ना? नंबर ऑफ ट्रेड्स में देखो ना आपको Yes. How can you see where you are in higher high, mid-band, retrace, extension? Yes. If you have a higher high, normally that's a swing. If you have a lower low, that's a swing. Lower lows, these are considered swings. higher high always Is generally the swing. And lower lowers are the swings. also So what comes after higher high? Higher low. So higher low becomes your retrace. lower high Yes, then lower high is your extension trying to form or not. is decrease. No. Higher low is at your higher high, higher low. Let me show you a picture on the study. The picture that you have in your study books on the power of trade, watch this. Favorites. Favorites. Let me show you a picture. This picture is given to you. Inside your power of trading, higher highs, higher lows. It's inside the PDF. That tells you swing retrace. So watch his video. Go on superareas.com under method number 3, swing retrace extension. So that tells you which one. So this is swing, swing, swing. Then this is a retraces. So you buy every retrace, which is a mid-band. If the price is coming from higher high, you buy from mid-band, right? If the price is coming from lower low, what do? Sell at a mid-band. So higher highs, buy, lower lows, sell. Can I see the divergence line before Yeah, you can not before. After the black candle, divergence line will maybe made. Not before. sometimes the divergence is coming. What I look at is strength. If the price went up and strength didn't, I can see divergence.
Let's take a look at, go back to, on 1510, go to around 1126. You see a white line? Look at the price and look at the strength. Strength, the blue line, it didn't go up at the bottom. Yes. No, look at the bottom, the blue line. Bottom, real bottom. Yes. Look at the previous high. The price went up, but the next price went up, but the strength did not go up. So whenever you have a price versus strength conflict, that's called the divergence. One more question. I will see that one. The last time that we were comparing a lot. Higher high, higher low is blue. High. Higher. Go to 30-20 and go to 30-20 chart on look at the previous swing. You had a blue. Slightly go back. Look, you have a blue. Yeah. You have another blue, higher low. Yes. Then you have a black. That means blue, and black. So when the candle goes to the bottom, I'm selling from there. So that's called look, that's a swing, that's a retrace, there's no extension. So what time you have? That happened at around 11 o'clock on 30-20. Swing retrace, extension, no extension, black candle to the downside. And black will go down. Yes. But it's not just any blues. It has to be higher highs, higher low blues. Because remember, lower high, there's another blue as well. So it has to come in this combination. Higher high. It has to come. Yeah. Higher high, higher low. And if after a higher low, you have a lower high, more chances price is going down. So now this is a higher, right? Yeah, so that's a swing right now. Right now you're in a swing. This way, yes. You're in a swing. Swing maybe in a higher or lower low, right? Correct. Swing is either in higher highs or lower. Right now you're going through a swing. So the other thing is black, blue. I will let me pull it up when that happened. Man, internet jump. Yeah, I'm looking for it. Go to 3:44 a.m. in the morning. Yeah, 1510. That's where the setup came. For a 1510 blue, black, blue. 3:44 a.m. Morning.
just still 4. Not 3. No, sorry. Okay, right click, go to data series, and let's change it. Don't scroll like this. Your chart is gonna get squeezed. So you have to go back. So put it back together. So right click. Oh, okay, sorry. If you want to see more, right click, change data series, number of bars, change it to like 5,000 and go back and change it back to normal. 5,000 number of bars. Yes. What is the date? Yeah, 5,000. Press apply. Now you will be able to go back to lots of time. So go back and scroll back. Just at the bottom, scroll to the left and go to 3:44 a.m. At the bottom, it's showing time. Go back. Not skews. Yeah. Like No. You see here? oh, 3:44 a.m. Yeah. You have a black, lower low, lower high, but then you have a blue, higher low. Price shooting upside. and when you come back. Yes. Come by here Yes. After the black candle. after the black one. So lower low, lower high. First higher low will tell you I'm going up. Two hours to go till the fireworks start. उसमें OCO लगाना चाहिए कि नहीं काम करेंगे? किधर? हाँ 2 बजे लगा दे एक्सपेक्टेड हाई पे एक्सपेक्टेड लो पे या अगर मिडल से उठाना है तो 30 पॉइंट जहां पर भी नैस्डैक है ईएस में तो ओसीओ का क्या फायदा होगा मूव ही नहीं करती लेकिन फायरवर्क्स नैस्डैक के लिए ज्यादा होते हैं ईएस बेचारी घूम फिर के S3 में चली जाएगी यार R3 में ईएस में जान नहीं है उस तरह फिर S3 पे वैसे ही बैठ जाएंगे आके यार R3 पे R3 पे वैसे ही बैठ जाए उसमें ओसीओ की क्या जरूरत है How you would determine R3, R1? क्या सॉरी क्या क्वेश्चन Areas दिए भी कहाँ से? कंप्यूटर पे आ रहे हैं आपके मेरे ये 30-20 में नहीं आ रहा। 30-20 की जरूरत ही नहीं एरिया 30-20 में नहीं आते 30 मिनट के चार्ट में आते हैं सेंटर में जी अब आपके बिल्कुल सेंटर में एक चार्ट है आपके 30 मिनट्स का ग्राफ है 30 मिनट नॉट 30-20 उसमें ऐसे दिखेगा आपको जैसे आपको सादे बोर्ड में दिखता है so Nasdaq shot up almost 300 points ये बोल रहा था मेरे को। हाँ ये आ रहे हैं ना ये एरिया आ रहे हैं
1510 mid band has given you a couple of points, I think. 30 20. ठीक 2020 में घटा है। ठीक What do you say? gave you मेरा MES का टच हो गया था मेरा टच नहीं हुआ। 3 points $2 I just only 300, 2988. 2988 298, how much you made 298. so you got $2 left it's okay just switch to micro and so you made $300 good come back tomorrow and trade it's okay उसने अभी पूरा कर दिया how many lots you took 2 lots no how many quantity one that's fine now look you have a blue you have a black in 1510 no black yeah I'm MES में MES में black है it's okay trade tomorrow now please make $10 and get out yes don't so you already made 298 out of the 300 target let's do it tomorrow congratulations आया बना भी लिया ES में 2 पॉइंट रोज के लग गया देखें उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है उसने क्या क्या ट्रेड लिए brother what kind of trades you took he's asking all mid band all mid band trades Only with that, green to buy red to sell that's it कुल्लू हम खलास that's and he did it in how many days today's your day number today's day number ये देखें इसका पहले दिन 314 दूसरे दिन 200 say mashallah please otherwise you know nazar you're doing great. so but remember 2 days were bad days and he left look at day number 6 he made 227 negative and went away day number 8 he lost 465 he didn't trade anymore so 2 back-to-back trades and then so and not only positive discipline negative discipline too.
So you're only focusing on mid band. Yeah. Because I'm not senior. I'm just junior. But you're doing great. Alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah. Thank you. कई दफा ना कम नो होना बेटर होता है. Yes. Ignorance is bliss. Yes, sometimes. Say no, it's better. Because otherwise, the more you know, the more you analyze, and then Too much analyzation, तो उसी में आप ना trade lose कर जाते हैं. Analysis is paralysis. मैं हमेशा कहता हूँ जो नया बैच आता है ना, पहले इतना जबरदस्त करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ ग्रीन और ब्लू मजेंटा ही दिखता है. वो फिर शुरू हो जाते हैं. और हमारे इतने एनालिसिस चल रहे होते हैं. हाँ, आप कह रहे हैं मैंने ब्रेकआउट भी लेना है, मैंने ये यस. Too much. सर आपके हिसाब से ग्रीन और मजेंटा ही देखना है, ऐसा कुछ देखना नहीं है. और कुछ नहीं. रेड में सेल करनी है, ग्रीन में बाय करनी है. कहाँ से? मिड बैंड से. वो अभी उसने हाई से ऑर्डर लगाया था 1510 के मिड बैंड में, और अपना वही 150 लिया, 2 पॉइंट लिए, बंद किया, घर जा रहा है. उसको अभी एरिया का ट्रेड का ही नहीं पता. जो R2 का करवाया है मैंने यहाँ पर आज 50 वो मुझे चाहिए ही नहीं. Take care, boss. You too. Okay. Take care of it. So we should trade as a beginner. We should trade in the 30-20 or 15-10. So trade 1510. That is better. No, it's not better. You trade 1510 on ES and watch the background color on 3020. So we will open both. Yes, you have to watch them together. No, man. The worst part of this business is waiting. You gotta wait and wait because
नींद आ रही है बातें बातें Because Nasdaq can go 930 to 20, almost 200 points from here. That's ऊपर क्योंकि Nasdaq अब R2 तोड़ गया ना और अगली कैंडल 4 आवर वाली भी ऊपर है, ग्रीन है, देखे कितना तक जाता है। 20,100 माइनस 19,928, 172 पॉइंट का है। हाँ जी, येलो भी दिखा रहा है। हाँ, बार के कलर का आप नहीं करें। हाँ, अगेन एक्स्ट्रा चीजें ढूंढ रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड कलर क्या है? पहले दिन आपको क्या सिखाया जाता है डैनियल की क्लास में? बैकग्राउंड कलर क्या है? ग्रीन, ग्रीन बाय। कहाँ से? मिड बैंड से। बस दैट्स इट, nothing else. No, नथिंग एल्स। no rocket science at all. I'm waiting for 2 o'clock. ये लड़का भी बैठा हुआ था उसमें ही एक एग्जाम्पल उसमें कुछ भी नहीं दिया। अब रेड होनी शुरू हो गई है, वही कैंडल। Yeah. Why? Okay, I'll put, okay. ये सेटअप देखा SRES का, ब्लू ब्लू ब्लैक, 2 पॉइंट मिले, 1 मिलना था। Yes, if it makes it goes below 15 and then it will make a lower low. New swing. ये 2 more ticks.
वेट कर रहे हैं अभी। आज मैंने पढ़ लिया तो क्वालिफाई कर लिया। वेरी पढ़ लिया इज डन। जबरदस्त। ना मैं तो सिर्फ वो एक ही किया आर्टिस्ट से अब डन कर दे। नहीं पर्डिया का एटलीस्ट ये फायदा है क्योंकि टेक प्रॉफिट में मुझे 250 बनाना पड़ता है रिक्वेस्ट से पहले। जी पर्डिया में आप बना सकते हो $100 और शाम को ले लो डेली पे आउट्स। वही 22 में इसी तरह 22 में आ जाता है। हाँ हाँ हो गया एरियाज आ गए हमें। हम इसका मतलब खैर करिए। आपकी फेवरेट स्टूडेंट की कल कॉल आई थी। अच्छा मुझे भी आई थी। हाँ फिर मैंने 3 स्क्रीनशॉट निकाल के भेजे 9:30 से। And I said, hey, it works. I think we're gonna have to have a serious talk Yes. about may have to, आप कहते तो बैन कर दो। no, we need to revoke some licenses and let me wait till Daniel comes back. We don't want students like that. ठीक है। Thank you. भाई ओसीयू कहाँ लगाना है? सर ओसीए में आपको करवा देता हूँ अभी आ जाए ना। Nasdaq में हाँ नैस्डैक में जो भी प्राइस चल रही होगी ना उससे हम 30 पॉइंट दूर लगाएंगे नैस्डैक 30 या 40 पॉइंट। स्टॉप लॉस 35 पॉइंट अगर अकाउंट गया तो 35 MNQ में तो नहीं जाएगा जाएगा जिधर मर्जी। 35 पॉइंट में नहीं, हाँ, वो तो स्पाइक है ना स्पाइक का होता है। ज़्यादा सुबह जी इसमें एक्शन होना शुरू हो गया। Nasdaq 900 good or 50 उसका 20,100 का रेट है। सर हम उल्टा पकड़े हैं। अगर हमने ये अकाउंट्स में जाना है ब्लास्ट के साथ दिस वे कि ब्लास्ट ने जब फोड़ना है तो इसने रेडिएशन कहीं तो फेंकनी है ना या R3 की तरफ फेंकेगा या S3। तो अभी लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही है मार्केट में तो रेडिएशन आएगी 2 बजे तो मैं 30-40 पॉइंट्स वाला ओसीओ लगा के बैठ जाऊंगा इधर या इधर साथ मुझे ले जाए। इन्होंने वो हेज करना सारे हेज नहीं है हेज का अगेंस्ट है। इसको है कि हमने बाय स्टॉप सेल स्टॉप करना है। और से थोड़ा आपको वीडियो भेजी रात को मैंने अपलोड करके सारी सर पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया कि क्या करना है 2 बजे। ये लोग सुबह 9:30 बजे आज फिर जय ने किया। मुझे एक सेकंड फोटो देखने दें। मैं जय भाई ने आज किया है किस तरह ओसीओ पे
6 लॉट के साथ $1270, तो मार्केट खुलता ही वो लॉन्ग चला गया। उसने कहा लॉन्ग वाले पिक हुए हैं। मेरा उसके भी पे हुआ था। हाँ, ये क्वांटिटी एक थी ना, इनकी क्वांटिटी 6। मैं एक माइक्रो के साथ में। हाँ, सिर्फ टेस्ट कर रहे थे। तो 1000 पॉइंट भी गई हुई है, हमने देखी हुई है, गिर के गिरती गई। एक्सट्रीम लो से भी 600 पॉइंट गिर गई थी। तो आज मार्केट काफी गिरी हुई है, तो शायद इंटरेस्ट रेट कम करने से उछले। एक पॉइंट की कितनी वैल्यू होती है? $20। तो MNQ की वजह से $2। यस, चार्ट कितना? चार टिक का 1 पॉइंट, तो $2 का मतलब 50 सेंट का 1 50 पॉइंट। सेंट का एक टिक हुआ। ठीक है। 40 टिक। आपने 30 पॉइंट्स बोले हैं उसके? 30 पॉइंट दूर रहना है प्राइस से। और स्टॉप लॉस कितना बोला? 35 नहीं। पॉइंट्स 30 से 40 पॉइंट्स में जाके बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाना है। लगा दिया। स्टॉप लॉस 35 पॉइंट, पॉइंट्स तो 35 टाइम्स 4 140। 148 लॉस बोला। 140 का लॉस तो नहीं 140 टिक्स का लॉस, हाँ 35 पॉइंट्स। तो अगर आप पूरा एनक्यू कर रहे हैं तो आपका तो 20 टाइम्स 35 बना ना, $700 का आपका 40 तो 2 या $70 का एक एमएनक्यू। इस तरह सेट होगा। 80 नहीं 80 बना ना फिर तो। कैसे देखिए 35 टाइम्स 4 क्या है? नहीं 40 पॉइंट्स अगर टेक अगर 40 टाइम्स का फिर 80 आपके बनेंगे कितने? MNQ में 80 बनेंगे। यस सर देखिए आप डाल भी तो उतना सा आई नो। देखिए कढ़ाई पिज्जा डाल रहे हो और मुर्गा खाना मेरी अपनी वो भी कढ़ाई रातों के साथ। कढ़ाई खानी है, देग भी नहीं बना रहे, देग होती है। लेकिन चक्कर क्या है ना, NQ में जा नहीं सकती, वो तो मेरा ले जाएगा ना फिर। हाँ एग्जैक्टली। तो आप ऐसे कर सकती हैं कि आप तो मुझे ये बनाना है ना। थोड़ा सा आप सिर्फ जाएं पहले लेजेंड्स है, हाँ लेजेंड की वेबसाइट पे जाके प्रोहिबिटेड चेक करें, ये पता लगे आपको न्यूज ट्रेडिंग अलाउ ही ना करने दें आप। ये में भी यस एपेक्स अलाउ करता है। एपेक्स अलाउ करता है मोस्टली, और टेक प्रॉफिट भी करता है EMA। आप उसको रिवर्स कीजिएगा, पता क्या करें, न्यूज हो लेने दें, S3 R3 पे बैठ जाए, वो न्यूज ट्रेडिंग नहीं होगी क्योंकि वो एग्जैक्टली 2 PM वाला तो S3 R3 Nasdaq का ना या MNQ। ES के भी 5 MNQ पकड़े, हाँ। S3 और R3 पे लगा दें, 5 ES पकड़े, S3 और R3 पे लगा दें। That will be sufficient enough to give us something. 5 MNQ S3 R3। Yes. और ES का क्या बताया? 5 S3 R3 दो ही बचे। MES ना? Yes. अब पहला मिड बैंड आ रहा है आपका लोअर लो के बाद, पहली रिट्रेस आ रही है। आ गई हो भी हो गई। अच्छा चला क्या, पास हो गया था? हाँ मिड बैंड को टच किया ऑर्डर ले दे लिए। दिया। अब आपने इनके साथ बैठ के इनको सिखाना है, जितने आप नर्वस थे डे 1 में, ये देखिए रोज के 8-9 पॉइंट। तब से बात करके बंद कर दिया ना, क्या बात कर रहे हैं आप? जब से इन्होंने बनाने शुरू किए हैं इन्होंने बात करनी बंद कर दी। अरे साइड से निकल जाते हैं। मैं अभी पानी भी आया। हाँ। आपने कहा 4 दिन से मैं कह रही चाय पीनी, चाय नहीं पी। आज तक चाय पीनी है ये क्या? रात का मसला है। अरे रहने दो भाईजान, आप ना आ जाओ। नहीं, दिल तोड़ दिया आपने दिल तोड़ा यार। मुझे बताइए आप समझ लीजिए, बस 8 दिन है ये के लिए, सिर्फ 8 दिन मैं वेकेशन पे जा रही हूँ। आ जाओ। से जरा
मुझे मालूम है यार। Oh, okay. Sorry to put you on a hot spot. ये हमारी ऐसे ही आज है Hey, Karim, how are you? Yeah, good, good. Okay. So did you have chance to, for the Sion, did you have chance to look his, because his partner is, okay, not happening anywhere. Yes, yes. Mhm, mhm. Yes. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Okay. Mhm. To be honest with you, they want to do a couple of things, so many things they want to do with the limited fund. And they want to have, what do you call, borrow a lot, I mean, lot of money from the outside. That doesn't work. Yeah, going too fast because his partner, this Russell, is after me, and almost 4 months I'm working with him every day, sending some documentation, and they are sending some other documentation. I mean, they don't understand. To be honest with you. No, no, business loan, business loan. All these commercials. See, mortgage, right? I don't do. You are the only person for me. From anywhere. Yeah, commercial mortgage. Yes, I am doing, but almost I spent 4 months with them. Visited their office almost 4 times. They visited to my office almost 3 times, but they don't understand. They don't understand this Sam's one brother, Hazam Hamzada something, Russell. I think I know they have different thought and different altogether. Yeah. Okay. How about this पहले चले जाएं, go for it. Okay, no problem, don't worry. वहीं पर फंस गई है एक. Okay. So at least get the response by this weekend, by Friday. But this takes longer time now, right? Because Mhm.
Just a quick question from Dubai. The question here. Yes, that's correct. आई थिंक सो, लेकिन ओसीओ उधर डिफरेंट चलता है क्योंकि वो तो Yeah, that's fine, no हर problem. चीज ही Yeah, खोल we सकता है ना can, मेटा में, तो आप ट्रेड डाल सकते हैं उनमें, कोई मसला, वो न्यूज ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। Correct, perfect, yeah. Right. हाँ हाँ, You take it. दे डू अलाउ, Yes. नो प्रॉब्लम। So you can, right? यस यस। They are charging commission on per lot, right? पर लॉट। Not per trade. So Rahul bhai, हम्म, if you notice, most of the trend change or reversals are happening between 12.5 and 13.5. Reversals जो आ रहे हैं, यस 12.5. सर कितने गया वीडियो? है। मैं सुपर एरियाज पे गया। ਉੱਥੇ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। It's for everyone. No, 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 for new users who are learning completely different thing. For the news, right? Not new, no, old users who are learning. कोई नहीं, वो सबके ही होते हैं शुरू शुरू 5-6 महीने से पहले नहीं होते। पेशेंस पेशेंस पेशेंस। हम बिना, मुझे अगर अपनी एंट्रियां बता दें, मैं आपको आपकी गलतियां बता दूं कि आप गलत कहाँ से कर रहे हैं। अब लड़के अब एंट्री नहीं सही डालेंगे, 1000 अकाउंट जाएंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी बता दे जी। एनी डेस्क चार्ट से वो करें ना, यहाँ एरो बनाओ। जो R1 S1 नहीं करता। नहीं, वो तो 30 मिनट के चार्ट में होता है। ये होल्डिंग, अच्छा ये वाली। तो ये वाला सही है तो ये क्या है? ये तो कुछ और आपने खोला। हाँ। तो मुझे जाए ना, नहीं गया। सर बोलो इसे ऐप को ठीक है ना, इसके हाँ। दबाएं, इसको दबाएं, दबाएं, चले आ गया। ये एरिया है। हाँ जी, ये वो जब वो हो जाता है तो ऊपर लिखा आ जाता है एफ, एक एरो आता है, एक एरो, तो जहाँ एफ की एरो नजर आए वो दबा के दोबारा अपनी पोजीशन पे आना। वो वेट में डलेगा। क्या क्या हुआ? अकाउंट का टाइम नहीं वो अकाउंट एक्टिवेशन ये नया ले रहे हैं तो खुद कर लेना। अकाउंट लेना, हाँ लेजेंड खुद कर लें। कैसे करें? लेजेंड भी जाए ना साइड पे, सुपर एरिया भी जाए, सुपर एरिया नीचे स्क्रॉल करें। ये कितने? हाँ करते हैं, चाहे ना भी करें, नीचे स्क्रॉल करें, नीचे यहाँ पे लेजेंड का लिखा हो, नीचे नीचे। हाँ लेजेंड का लेना ना। हाँ करें, क्लिक नीचे करें। उधर कौन सा लेना है आपको? 25,000 वाला लेना। हाँ इसको क्लिक करें, सही करें नीचे। चलिए लॉगिन होना फिल करके चलो कॉपी तो मैंने करना है। ठीक है, तो अकाउंट ये तो 3 से याद है। अभी कर। मुझे एनी डेस्क दें। जी
पहले इनका ले लूँ मैं 1941 आप यहाँ बनी है ना, नहीं और हाँ ये रजिस्टर नहीं आपका तो ऑलरेडी है ना, लॉग इन करना है आपको। ये आपका बना हुआ है, आपने लॉग इन करना है रजिस्टर द्वारा, लॉग इन ये लिखा हुआ है, ये हाँ करेक्ट, हाँ ये आपको ईमेल द्वारा पहले बना हुआ है, हाँ लॉग इन करें। आज बाइक पे पंगा ले गया हैं? MNQ में पंगा ओसी हो ना, चांस से बढ़ने जाना है। अगर इधर ही बस कैरी की जरूरत नहीं है, और इसमें तो नॉट करेंगे, वो भी समझे देंगे। मैंने ये बात अरे यार मेरा भी यही हाल है। ये सर्विस कराई है और क्लैप ऊपर MES मेरे पास नहीं है। MNQ ये स्पाइक जो अभी क्या मिलते हैं बट MNQ में मुझे भी मेरे पास ये ले लेना 25,000 25,000 हाँ डिटेल डालिए यहाँ पे सुपर एरियाज का कूपन डालिए। MNQ में भी स्पाइक ले लो ना नाज़डैक ये था ऑटोमेटिक टू द डॉट। पूरा पूरा और R2S2 पूरे डॉट से ही। मैं असल में नैस्डैक के साथ साथ ES देख रहा था, तो ES जो नैस्डैक के नंबर ES में पहुंच रहे थे ना, इसलिए मैंने सारा से कहा था ऊपर वाली लिमिट नहीं, अच्छा क्योंकि नैस्डैक और ES सिंक में नहीं थे। वो गया एरिया था 8 से 10 11, वो 12 से वापस आया 30 हाँ, लेकिन मीनिंग के मैंने कहा था 11 से लेना। That's what. ये चलो उनके वेबसाइट पे देखिएगा, सर्टन अलाउ सर्टन नाउ। सर देखो, एक या ते R3 S3 ते जाके नैस्डैक ते खड़े हो जाओ, एक क्या ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि जिथे 2 बजन एक बाय सेल लिमिट लगाओ, सेल स्टॉप लगाओ, एक बाय स्टॉप लगाओ, और जाते जाते तो नाल आ जाएगी। हुण देखना है कि 1 बज के तो नाल बैठा है, 1 घंटा रह गया, किथे है प्राइस। अगर प्राइस नॉर्थ जाएगी, बाय स्टॉप लावांगे उत्ते ला जाएगी, अगर सेल स्टॉप लावांगे ना ला जाएगी। नहीं देखो, या तो पूरा अकाउंट ही जाएगा ना, क्योंकि जिस स्पीड ना उन्हें जाना है अकाउंट 2500 की वैल्यू नहीं है। देखिए आज R2 से भी जिसने फेंका ES भी तो अच्छे पॉइंट मिले यार पहली अटेम्प्ट में। आई डोंट नो किसी ने R2 मिस किया क्यों, ES में यार। क्या नंबर था उसका सर? 5713 212 नहीं, जिससे जब नीचे जाता है 6 पॉइंट, वो एग्जैक्ट नंबर। वो एक्चुअली आर्डो को क्रॉस करके फिर नीचे जाता है। अच्छा क्योंकि इधर खुला हो गया है, उस वक्त आर्डो में नहीं पहुंची बात में ये लिखा है। अच्छा तो आठ हो गया। और उन्होंने स्टॉप लॉस करके लगाया। 10 मिनट वेट करो, 10 मिनट वेट करके निंजा साइन आउट दोबारा करोगे तो ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਨੰਬਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ES ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂ ਜਾਂ NQ ਦੇ ਵਿੱਚ ES ਨਹੀਂ। MQ नहीं MQ MNQ नहीं MQ अगर हज करना है है जी, नहीं करना, OCO करना है। आप नवा आ जाओ 10 मिनट वेट करो 10 हो गया। so what's OCA OCO One cancel is another. The word is called OCO. One cancels another. Let's say you want to place a trade in both directions. 2 o'clock news is going to come and you don't know interest rate is up or down. Nasdaq is going to go crazy. So the way to do this is, even you can do this at 9:30 every day. You can do a buy stop and you can do a sell stop. That means you want to go with the flow. The moment it hits your order, it will cancel the other one and take it with you. But what's OCO?
OCO क्या मतलब? Other One cancel cancels other. other. Sorry? One One cancels cancel अच्छा, other. one cancel other. दोनों की बोल रहे अच्छा गाड़ी है ना? गाड़ी है ना? सर 25 की सेल लगी है। सर या कोयला की सेल बताओ। 45 की। मेरा फेवरेट इस वक्त टेक प्रॉफिट है, क्योंकि 250 बनाओ शाम को ले लो, 250 बनाओ शाम को, पीए एक दिन में पास हो जाता है। पर्डिया आज मैं लाइव चला गया हूँ, तो पर्डिया में 100 का फायदा है। अब 100 बनाओ शाम को ले लो। वाइज में क्लिक करें, 37 मिनट में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। हाँ, वाइज का फ्री का अकाउंट। ऑनलाइन अकाउंट। तो कोडिया में कितने आई है? पर्डिया में नहीं। हाँ जी, हाँ जी, यस, आई एम हियर अंटिल 2:20 PM, 2:30 लगा देंगे। नहीं उन्होंने भेजे में देखा है कौन सी मार्केट 15 मार्केट कौन सी जो भी हो लेकिन नहीं वो ऑटोमेटिकली 6 बजे 5 से 6 बजे तक का वक्त है, 6 बजे तक फिर ऐसे ही चलना शुरू है। मार्केट को खुली रखी है 24-23 घंटे, वक्त नहीं सिर्फ 5 से लेकर 6 तक, 6 बजे के बाद फिर ऐसे ही चलना शुरू है। मार्केट को नहीं मतलब 15 मार्केट के बंद ही करने अभी जो लोग हैं वो कर संडे सैटरडे संडे हमने तो अपने हिसाब से चलता है मंडे तो शुरू कर हम सैटरडे संडे से हमारा जो डे है मंडे तो फ्राइडे है। हमसे बंद करके देखिए आगे ये मैसेज आता है इसे रोल ओवर डाल करें जब आया डबल आएगी फिर एक दोबारा डिस्टर्ब करेंगे की चीज MNQ सर एक लॉट बहुत है सर। S3 दी वैल्यू देखो ना, या R3 दी वैल्यू इस
No bad words. Mr. More You said तो बनेगा भाई नो उर्दू Yes. किसके नहीं डेस्क में हो इस वक्त? शरीफ भट्ट साहब लेकिन थे वो पिशावर के तो वहाँ नहीं हमने नया काम किया है अब अपना ही शो है हम करेंगे फिर हो जाएगा क्योंकि अभी टाइम लगेगा आपके लिए और मेरा हो दो दिन आप खिला लेगा ये सर आपकी पेमेंट का लिंक भेज दिया मैंने। चल रहा है कुछ? पाकिस्तान क्रिकेट क्या कर दिया? मैं देख भी नहीं रहा। 91 ऑल न्यूजीलैंड की और दूसरा भी हार गया आगे हुई 137। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो वो भी अब न्यूजीलैंड के साथ मैच है। सर वो टीम गई है जिसमें 5-6 मैचेस खेले हुए हैं, लड़कों को एक्सपीरियंस ही नहीं। शोर वक्त पे बोलता है भाई R2 पे खड़ी हो गई। इस पे चला होगा बिलो भाई चाहिए ना अभी ओ आईपीएल IPL is going to start on 23rd. या नहीं थर्ड मॉर्निंग नहीं 23rd या चाहिए ना ये भी प्लेयर आएंगे नो इट्स नॉट He is someone. he is a commentator, he is also a very good chef, एनालिसिस analyst, yeah, political and वैसे ही वो है एंकर है बिहारी खिला दो भाई ये दिल्ली है भाई, ये वो ये अपनी खीर है दिल्ली उसकी है। ये वो ये तो ये क्या पराठा नहीं ये तो फ्राइड पराठा अरे नहीं यार ये पराठे वाली गली है, मैदा दिल्ली है। वो नहीं वही है भाई पराठा वो जो कह रहा हूँ अरे यार पराठा ही है, हैं पराठे वाली पराठे वाले हाँ वही है जो कोई इसको पराठा कहते हैं अरे यार स्टफ पराठा it doesn't look like paratha it looks like a maida hard form नहीं something fried अच्छा इसको पराठे वाली गली में, पुरानी दिल्ली में और उसका में ठीक है ऐसे चीज खाना इंग्लैंड वाली देखी ना मैच अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो ये इसका वाला चैंपियंस का हाँ, बहुत बुरा मारा था बहुत लग सही आउट ये वाला बेकार है दो तो टीमें इस वक्त लगी हुई है नीचे इंग्लैंड और पाकिस्तान इंग्लैंड का तो नेशनल वही है ना क्रिकेट ही है उनका आ जाएंगे तो
इंडिया का नेशनल स्पोर्ट क्या है? इसका इंडिया का क्या? फील्ड और हाँ हाँ फिर और है तो हॉकी। उसमें देखा होगा फोन तो थोड़ा बड़ा है। इंग्लैंड की यूके की नेशनल डिश क्या है? यूके बटर चिकन। और आ गया सेटिंग नेशनल डिश स्पॉट कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला एज अ नेशनल डिश। जी अगर लेजेंड लिखा नो रिस्ट्रिक्टेड ट्रेडिंग डेज मतलब हम उसमें कर सकते हैं। हाँ अब उठा दिया अब आप कर सकते ये में उन्होंने पूछा तो जवाब नहीं है। हाँ जी बट नो रिस्ट्रिक्टेड ट्रेडिंग डेज। आपको बताएगा आपने कैसे पर्सनलाइज करना है आपने पढ़े उसमें कर सकते हैं हमने उसके हेडलाइन में मारना है भाई कम्युनिटी के साथ एमके कर सकते हैं ये में कर सकते हैं बताओ क्या न्यूज़ में ट्रेड कर सकते हैं ये है। हाँ हाँ ये बात है। लेकिन आपने लॉस है 140 प्रॉफिट है 200 नहीं मान लो हाँ एवरी डे इज $5 हाँ ऐसा ये ना कि वो खुद ही सेव हो गया आप ट्रेडमेंट खोले वहां से कैंसिल कर दीजिएगा हाँ वो तो खोल के बैकग्राउंड में होगी इस तरह से खोल के ऐसे स्टॉक लीजिए मार्केट आप ये बस एग्जैक्टली चेकलिस्ट कर देना सर अभी आएगा जोर। मैं आपका करता हूँ, आप निंजा में लॉगिन करें। एटलीस्ट 3 मिनट का हमारे पैसे थोड़ा सा चाहिए तो एक बार में निकाल दिया नहीं ये कौन सा आपने मिड बैंड क्रेडिट उनकी हेल्प कर दें। ठीक है, आपका कुछ नहीं हो सकता। फोटोकॉपी सारे घर छोड़ के हाँ एमएनसी में बोला हाँ वो करे जाते हैं मसला वही हो गया ओके यू राइट सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे आप कह रहे थे ये मैं हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए खत्म करें ये 30 दिन में रोज के 2-2 पॉइंट लेके। इब्राहिम ने कर लिया यार, उसका नाम उसे पता कब ज्वाइन किया है? 2 हफ्ते पहले। उसको जो से हम लोग कुछ और पता नहीं है ना सिर्फ मिड पे नहीं कर रहे यहाँ अपना फोन नंबर डालिएगा। क्या क्रिकेट के बीच में डाल कच्ची पुड़म होगा कच्ची पुड़म होगा पता गली में तो मास्क लाते हैं ना। कच्ची पुड़म पाकिस्तान वर्सेस 17 खड़ा गया था नीचे, इतनी दफा सर्कल से बाहर आ गई।
नहीं अगेन खुशी इस बात की है कि आपको ट्रेड की एंट्री आ गई 5 बारी मैं 9 बारी हर पॉइंट का 1 9 5 45 हाथ लगा के वापस चले जाते हैं एक स्टेप इधर एक स्टेप इधर डन हो गया सर। मैं भी आपको बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है कॉपियर को। एनी डेस्क कर दिया तेरा इसको बोर्ड कर बोर्ड तो दवा करता हूं प्रॉपर्टी में है ना फोन छोटे कंप्यूटर के ओके ओके मुझे दे एनी डेस्क 1861 313 दवा करता हूं एक्सेप्ट करें। हाँ, गॉड ब्लेस यू। आज शाम को फोन कर लेना। आपने छोड़ दो I didn't know now what time you are sorry. अच्छी था ये हाँ? ये हाँ जी, हाँ जी। इसको यस करना Okay. एक्सेप्ट एंड यस। अब आप निंजा खोलें। Okay, bye-bye. ये forever है ना सर ये Thank you. All the best. forever है तो इसका फोन तो भी बदल करते हैं जी। टॉप लॉस 0 नहीं रखा है हाँ? टॉप लॉस 0 नहीं रखा है हाँ जीरो नहीं देता वो कुछ कहता है दूर रखो आपका नहीं देखो 2500 डिवाइडेड बाय वी नैस्डैक 125/4 500 स्टॉप लॉस 500 भी नहीं पूरा अकाउंट ही रिस्क पे है ना तो और आपने प्रॉफिट कितना लेना है अगर 3000 भी निकल आए 3000 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय टाइम्स 4 600 का क्वांटिटी बढ़ा लें रेदर देन आप इतना लंबा खींचे हाँ मेरे को चाहिए 750। किस में टेक प्रॉफिट में टेक प्रॉफिट में ईएमआई अलाउड है ईएमआई अलाउड मैं तो PMO भी रेडी रखा हुआ है। ये मिड बैंड भी ले लिया ये 7.5 पॉइंट का मिड बैंड था अब उन्होंने अपना रिड्यूस कर लिया मैंने मिड बैंड ही ले जाने ग्रीन टू बाय ग्रीन टू सेल रेड टू बाय अदर वे ओके सर ये आपका मास्टर कंट्रोल पैनल है इसमें फ्यू चीज देख लीजिएगा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप ट्रेड कर रहे हैं मैं एग्जांपल लगाता हूँ ईएस ठीक है ये लिखा हुआ है लीडर अकाउंट और ये लिखे हुए हैं फॉलोअर अकाउंट अब मैं आपके लिए क्या करता हूँ मैं आपको मल्टीपल सिम अकाउंट खोलता हूँ पहले ताकि एग्जांपल यहाँ दिखा दूँ 1 2 इसको 1 को बैक करके 2 लिख दें ये 2 हो गए इसको 3 कर दें ताकि मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन देनी है कितने हुए यार? कितने नहीं हुए? Yes, sir. ए देखो हुण मैं कनेक्ट किया है सिम 101 लीडर सिम 1 2 3 फॉलोअर ठीक है हुण इत्थे असीं ट्रेड पावांगे मेरा yes ही बना होगा। लेट्स से तुहाडे कोल मॉनिटर है कोई डॉम किधर है
डॉम तो गायब क्यों है? डॉम क्यों नहीं नजर आ रहे? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਸੈਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ। मीनिंग ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਸੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਣਾ ਸਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, मैं सेल दबाया, उन्हें $37 काट देते हर अकाउंट। होता है ये ग्रीन बैकग्राउंड होता है, आप लोग सेल में बैठे होते हैं, ग्रीन रेड बैकग्राउंड होता है, ग्रीन में होता है, तो ये चक्कर है। तो अब मैं यहाँ क्लोज करूंगा तो सारे क्लोज हो जाएंगे। तो ये ऐसे कॉपियर यूज करना है। तो ये विंडो खुली हुई है, तो आप जो भी अगर MNQ कर रहे हैं, MES कर रहे हैं, GC कर रहे हैं, तो आप अपने साथ साथ लीडर और फॉलोअर, तो हाँ, तो 352 लीटर लिया, फिर आप इनसे कहेंगे मेरे पास ये वाला फॉलोअर है, दैट्स इट। ये ग्रीन होगा तो फॉलो करेगा, नहीं ग्रीन होगा तो नहीं फॉलो करेगा। डन हो गया। हाँ जी, नहीं खुली होती है बाय डिफॉल्ट। मैं आपको जाएं वर्क स्पेसेस सेव कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम ये खुला हो। अरे मैंने वो सिमुलेटर पे ट्राई कर रहा हूँ यार, मैं एक्चुअली वो OCO ट्राई कर रहा हूँ। आपके चार्ट स्क्वीज्ड हैं थोड़े से। आपको फिर जाके वो एंड में बंद करोगे तो नो ही करना, आप अपने शेप कर लिए। सर हाँ जी भाजन, एक्सपेक्टेड हाई से सेल दा ऑर्डर पावा मैं उड़ कहने लगा सी बाय पाओ, मजाक सेल ही होएगा। एक्सपेक्टेड हाई ते ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਸ। नहीं चाहिए बट कल मैं फर्स्ट टाइम वेट कर रहा है और नहीं OCO एक्सपेक्टेड हाई सेल इसको चेंज करो OCO। आपकी जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है ना, आपने बहुत छोटा किया हुआ है, तो अब मैं प्रॉपर चार्ट्स दिखा रहा हूँ। ये मिड बैंड भी चल गया। और आपके कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिन्यू होने वाले हैं। मैं कर रहा हूँ उसको, जून में ले जा रहा हूँ, हम मार्च में बैठे हुए हैं, तो ये सब जून में आया। ये मिनट में भी चल गया यार, 3 मिनट लगातार चल। हो गया सर। नंबर छोड़ दोगे नंबर अभी नंबर भी फिक्स करता हूँ, प्लस ये
अगर ये 150 की होती है आपने वो करना था अगर डे काउंट करना हाँ, डे काउंट होना है तो 150। अगर डे काउंट ना रोल मतलब उससे हो ही ना तो फिर वो क्या नहीं, पैसे ऐड हो जाते हैं, डे काउंट नहीं होता। तो डे काउंट होना जरूरी है वैसे नहीं, आपको 10 दिन के बाद पैसे मिलेंगे। चाहे वो 150 से कम हो हाँ, लेकिन डे काउंट कर डे काउंट 10 दिन। देखिए आपने 50 दिन ट्रेडिंग की और सिर्फ 10 दिन वो ऐसे कहते हैं यार 3 पॉइंट तो दिलवा दो, ताकि उनका भी तो कोई फायदा हो जाए ना। यस, लो जी, आपके नंबर भी बड़े हो गए, अब रीजनेबल साइज है। ये अब आएगा अब रेजोल्यूशन देखें ना बढ़िया पहले तो ये मैं कर रहा हूँ। ये ले जी, थोड़ी थोड़ी हरकत पैदा हो रही है, लेट्स सी। ठीक है जी, ऑल डन। करती है मैंने। ग्रीन टू बाय, रेड टू सेल रखें, रैंडम एंट्रियां ना डालें। इम्पॉसिबल है कि नीचे से लोअर लो हायर हाई से आए। अभी देखें नीचे गिरते हुए, अभी चार्ट देखें 1510 पे रेड पे सेल कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 में तो 4 तो मैं देख गया हूँ। खोलो ग्राफ का सर है कह रहे हैं कि जब पहले सी गल कर रहे हैं हाँ जी, नहीं मजाक कर रहे हैं क्योंकि इस वेले ना प्योर गैम्बल चल रहे हैं, कोई ਇਹਦੇ ਚ नहीं, पता नहीं की होएगा, R3 ਤੇ जाएगी। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹਾਈ ਤੇ ਸੈਲ ਲਗਾਇਆ। हाँ जी, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲੋ ਤੇ ਬਾਈ ਲਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ हाँ, ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਆਪਣੇ अगेंस्ट क्यों जाएगा? पिक नहीं, एक्सपेक्टेड लो तो बाय होएगा ना। ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲੋ ਤੇ ਬਾਈ ਹੋਏਗਾ। हाँ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਾਤਾ। हाँ, लेकिन उस प्राइस पे जाएगा। मार्केट पूरी थੱਲੇ गई तो एक्सपेक्टेड लो ਤੇ ਵੀ ਤੋੜ ਜਾਏਗਾ। हाँ, पॉसिबल है, गारंटीड है कि पिछली दफा नहीं उत्थे उत्थे स्टॉप लॉस आ जाएगा ना। मेरी गल सुनो, स्टॉप लॉस भी तो ससी लाया हुआ है ना कि अगर तुसी अपना पूरा अकाउंट ही सैक्रिफाइस कर रहे हो, रिस्क है ना, पूरा गैम्बल है कि यार साडी प्रेडिक्शन है कि एक्सपेक्टेड लो तो इन्हें बाउंस बैक करना। हुन लास्ट इंटरेस्ट रेट 18 दिसंबर ਨੂੰ एक्सट्रीम लो तो 600 पॉइंट गिरी सी। नाउ नथिंग वी कैन डू। तो इन मार्केट कि ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਆਰਡਰ ਲਗਾ ਦਈਏ ਜਿਸ ਪਾਸੇ डायरेक्शन ਹੋਈ ਉਸ ਪਾਸੇ। मैं सुबह से यही कह रहा हूँ कि लेकिन न्यूज ट्रेडिंग अलाउड नहीं है ना, तो वो न्यूज ट्रेडिंग नहीं कहलाती। जो आप हाँ, ये उधर पहुंचेगी तो देखेंगे, वो तो न्यूज के बाद पहुंचेगी। जो न्यूज के अंदर है वो न्यूज ट्रेडिंग है कि आपने जैसे ही 2 बजे या इधर जाएगी, वो न्यूज ट्रेडिंग है। एक न्यूज ट्रेडिंग नहीं है, एक न्यूज ट्रेडिंग है। एक को एक्सपेक्टेड लो को पहुंचते पहुंचते पहले 6 मिनट लग जाए ऊपर। हाँ हाँ, लेकिन ये नहीं है न्यूज ट्रेडिंग। आज इन्होंने R2 से बेचा, वो न्यूज ट्रेडिंग तो नहीं है। R2 पे खड़ी हुई है जा नहीं रही R2 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट भी बन गया, भी बन गया। समझ लो ऐसे करेंगे तो चलेगा नहीं, कहीं पैसे उठते रहेंगे। मुझे भी अभी समझ नहीं वो डेफिनेशन है ना बाय आया तो कम से कम बाय भी समझ आपके ना पावर ऑफ ट्रेडिंग है ना, ये WT स्टडीज में पावर ऑफ ट्रेडिंग के अंदर लिखा हुआ है कि ऑलवेज बाय आफ्टर अ हायर हाई
that means it made a higher low. We always buy very clean background and a magenta background. Always sell after a lower high. तो वो lower high जब बन जाए तो sell कर दो. Higher low में buy है, lower high में sell. ये सिंपल सी चीज है जो हम लोगों को बोलते हैं ब्लू ब्लू ब्लैक 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 ब्लू. यार कुछ तो यार तो लोग ये किताब खोल के नहीं देखेंगे तो उन्हें पता कैसे लगेगा. वो डे 1 पे बताते हैं. अब आपको याद भी नहीं होगा कि आप ओरिएंटेशन पे आए थे. लोगों को याद दिलाना पड़ता है बेटा बीकेम में ओरिएंटेशन आया. People are very short term. राफे भाई के तो बहुत पेशेंस है. मेरे में अपना बेस्ट हूं. हो गया. Okay. मैं अभी जा रहा हूं. इसका इफेक्ट आज शाम को भी होगा, कल भी होगा. तो कल अगर मार्केट जिटरी नहीं थोड़ी एक्शन होगी उसके अंदर. ठीक है. Be very careful. अभी तक तो रेड ही रेड नजर आ रहा है हर तरफ. 50 हैं. मैं आपका अल्लाह भला करे. 15-10 रेड, 30-20 रेड, 30 मिनट रेड, 60 मिनट रेड, 240 रेड. लेकिन ये रेड हो सकता है टेम्परेरी हो, सारी इधर दिखा के तो वहां से लेके जाए. बट लेट्स सी. आई डोंट नो. Every time interest rate comes, I am super excited just to see how low or high market can go in a single day. So the longest I've seen is December 18, 1,000 points. एक short में नहीं, मैंने वो expected high, extreme low, and then new, and then it was like it's never coming back. Exactly. We used to say just. तो डेली नैन की जो आपकी जो शीट है ना उसमें 18 दिसंबर देखिएगा. सर मार्केट ओपनड एट 22,355 and it closed 21,311. 1,044 points in that interest rate. So now let's look at next interest rate. What happened on there? So that was all down, even though interest rate was cut. Even though it was cut. So now December IR, let's see. They won't cut them those rates. They're आप not increasing it, but they're not decreasing. अच्छा आपके ख्याल से सेम रखेंगे? Okay. 29 January, it only went down to S2. The movement was only 260 points. Now next So time. 8 points कम होते हैं. You're talking about Nasdaq, right? Nasdaq. And this is now the next one happening now after January. So interest rate IR news, we are waiting. So 30 points up or 30 points down. So because so far it has made as what do you call it? As low as high as 195 points today. So it went as low as 705 and it went as high as 900. Short does happen faster, so let's see. आपने बताना है कौन सा नंबर में डालना है. सर मैं आपके साथ बटन क्लिक करूंगा. मैं कहूंगा कि S3 आ गया, बाय करते हैं. पहले देखना है कि जाती कहाँ है, स्पाइक किस तरफ. आई नो बहुत सारे लोग OCA ऑर्डर लगा के बैठे होंगे सेंटर में, क्योंकि ये एपेक्स पास करना यही टाइम होता है जिसमें 2 अकाउंट नहीं खराब होते. कईयों को जानता हूँ 3 लाख वाले लगाए हुए हैं. कितने क्योंकि नहीं 10 लॉटों से, क्योंकि 20,000 बनाना है ना. 20,000 डिवाइडेड बाय $200 का लॉट. मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव हुई ना, उनका पूरा टारगेट खत्म हो जाना है. लेकिन 100 तो हो जाती है यार, इतना मसला तो नहीं है. तो 10 लॉट नैस्डैक 3 लाख अकाउंट और खत्म भी जल्दी होगा. बट रिस्क कितना है? $40 का. अगर पास हो गए तो पास हो गए, अगर नहीं पास हुए तो FTMO में Nasdaq का कुछ करना है. FTMO में नीचे से गिरी तो लॉन्ग कर दीजिएगा. और
10 लॉट के साथ Yes, yes. और अगर चढ़ी तो वहां से 10 लॉट एफटीएम 300,000 के बड़ी वो कितना है उसका पीए की फीस? Sir, $125. Exactly. So it's gamble. It's gamble. 200 पे $200 का प्रॉफिट है। थोड़े ना उसमें झटके आने शुरू हो। I can see the pulse of Nasdaq going heartbeat उसकी ना। ये चलना शुरू हो गया Nasdaq is just falling like. Nasdaq has gone down to pivot point and bouncing up. So the 31 point की move आई है, ये 1510 ध्यान से severely oversold है 3020. Yes. तो 1510 का मिड बैंड जरा ध्यान से, क्योंकि 3020 को रिट्रेस नहीं मिली अभी तक। 6 मिड बैंड लग चुके हैं, लोग 7वें में एंटर होते हैं, वो कहते हैं यार मिड बैंड नहीं चलता। और पीछे आपको बुक में उन्होंने अभी कहा है, लिखा हुआ है फर्स्ट रिवर्सल सबसे बेस्ट है, हायर हाई से आए लो। सो बिल्कुल सही। ट्रेंड चेंज Yes. फर्स्ट मिड बैंड। यस, ट्रेंड चेंज फर्स्ट मिड बैंड या करंट प्राइस से 30 पॉइंट्स नीचे है ना, 30 पॉइंट नीचे करंट प्राइस। हाँ, जहां से वो मिडल से भागेगी, जो भी करंट प्राइस। लेट्स सी। ये चार्जर किसका है? मुझे वो मेरा रिसेप्शन पे हां नहीं कौन सा होगा? एंड बंद कर देना उसके बाद
फॉर्म भाई 1 पॉइंट मिड बैंड दे गया और 2 लिखे। मैं भी क्योंकि वो स्विंग इतनी बड़ी आई है कि बल्कि 3-4 पॉइंट ले गए। ओके जी, टेक केयर। इरफान भाई आसान है ना 2 पॉइंट लेना पूरे दिन में। अगर मैं आपको 7 घंटे बिठाऊं और 2 पॉइंट दूं वो ज्यादा आसान है यार, ये ज्यादा आसान है। और लेके खा पी भी गए 2 पॉइंट, क्योंकि यहाँ से गैप ट्रेड बन सकता है 30-20 पे मुझे लगता है। या 31 पॉइंट्स की स्विंग आई है। अब दोबारा ना मिड बैंड में जाएगा क्योंकि उसने रिजेक्शन विक दे दी है। तो देखिए इन्होंने सिंपल है ना, दोनों रेड है। आपने जाके सेल कहाँ से करना था 5698 से, वहां से सेल किया, ट्रेड खत्म हो गया, डन। 2 पॉइंट लिए बाहर आके। तो आप बिगिनर्स के लिए, बिगिनर जो ऑटो ट्रेल कर रहे हैं उसमें 8 के बाद ये ब्रेक इवन ट्रेड था आपका। नैस्डैक में थोड़ी हलचल शुरू हो रही है। Which account I can take Nasdaq? It's all PAs. I don't want to risk a PA. स्ट्रगल हो रही है अभी। उन्होंने पहली अटेम्प्ट में ले लिए थे। अभी ग्रीड में ना $5.70 लेने बैठा हुआ कि मेरा वो थ्रेशोल्ड उतना खराब है ना, लेकिन मेरे से गलती से 5 माइक्रो लग गए। दिलावर ट्रेड ना, तो 5.70 लेने गया था तो मैं यार थ्रेशोल्ड पूरा कर दूं 2500 का। उसने कहा मैं वेट कर -$14। I mean it's not much but I'm saying कई दफा आपको वो रिवेंज अभी यहाँ रियल गैम्बलर्स बैठे हुए हैं, आपको पता है, रियल, क्योंकि रियल मनी मेकर है। कैसीनो से तो बेहतर है ना, 50% ऑड्स हैं यार। यहाँ 2 बजे GFF में हेज करेंगे लोग अपने, मेरे 2-3 दोस्त हैं सर। अभी 15-10 तो पूरा हो जाए तो वो पैस हो रहा है। तो 10 नैस्डैक खोलेंगे लॉन्ग माइक्रो, 1 नैस्डैक खोलेंगे शॉर्ट, 10 और 1 पूरा हो गया। अब वो 0 का बैलेंस चल रहा है क्योंकि एक तरफ GFF है ना, $30-40 हज़ार पड़ा हुआ है,
एक प्लस 500 है तो दूसरा नेगेटिव 500 है। तो देखते जाएंगे कहाँ उनको जहाँ फील होगा एक पॉजिटिव वाला बंद कर देंगे, नेगेटिव वाला जितना कम लॉस लेंगे वहां बंद करेंगे। तो मीनिंग कि वो हेज वाली सिचुएशन है। तो आप ये कर सकते हैं कि एग्जैक्टली एक साइड पे खोल दें एग्जैक्टली ऑर्डर एफटीएम हो के, तो जो पॉजिटिव हुआ अब हेज तो जीरो हो गया ना, तो अब आप देखें इसको हेज तोड़ना कब है ये चैलेंजिंग हो जाता है। मेरा 8,000 लेस है, 2 लाख होना चाहिए था, 192 आने नहीं यार, ट्रू अच्छा हो जाएगा, एक्सपेक्टेड लो आ गया ना, तो ये अगर 1000 पॉइंट वाली गेम हुई ना काम बहुत खराब हो जाना। तो अगर ऊपर चली गई तो बहुत अच्छा रहेगा। जुलाई बाई मीन्स 140। अच्छा सर, किसी और हाँ जी हाँ जी, I need to make $8,000 to break it and FPO. क्या करूँगा? सर आपको एरिया ट्रेड ही करने पड़ेंगे ईएस नैस्डैक में और कुछ भी नहीं। आज जिस तरह R2 था, एरिया ट्रेड से अलावा तो ईएस आपकी वो नहीं होती ना, एफटीएमओ नहीं पास होगा। एरिया ट्रेड ईएस में भी कमी था। नहीं आज R2 सॉलिड है, बल्कि वहां से गिरी है दोबारा R1 के अंदर 6 पॉइंट का मिड बैंड ट्रेड। एक नोट कितने का होता है हमारा? 50 का पीपी से बाउंस कर रही। मुझे लगता है ये पहला ब्लू आया आफ्टर ब्लैक ब्लैक, तो ये लेट्स सी 15-10 में देखा। नहीं कि यहाँ से रिवर्स होती है कि नहीं, क्योंकि गिरती चली आ रही है ना, लोअर लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, या पहला हायर लो आया है। जब वो ये गिर रही थी ये उस साइड पे पहला था, अब ये गिरते हुए ये पहला हायर लो आ गया। हाँ जी हाँ यस $1 50 में $1 मूव होगा ना, उनके टिक नहीं होता, वो प्राइस टू प्राइस जाता, वॉल्यूम होता है 0.1 0.2 0.3। अब एक इनका तो डेमो होता नहीं है, एक लगा के देखे ना, सिर्फ एक 1 उसका इसमें जनरली ताल्लुक नहीं। अब देखें यहाँ से ये शूट अप करती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ इसने लोअर लो नहीं लगाया, तो ये हमारा एक पहली डायरेक्शन है कि यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए, ये पहली यस। अब यहाँ से ये कितने पॉइंट ऊपर जाती है, लेट्स सी 5700 तक तो इसको जाना चाहिए, 5700, क्योंकि वो 30-20 का मिड बैंड है। ये जगह अभी ये चल रहा था, ये Nasdaq touched the pivot and went back up. खड़ी है एब्सोल्युटली सेम प्लेस 817। और अगर आप किसी अकाउंट में हैं प्लीज ट्रेड वेट खोल के रखिएगा, चार्ट्स बंद हो जाने हैं फिर आपकी पोजीशन नहीं निकलनी। यस $33 का एक अभी लोअर लो लग जाएगा, यहाँ से एक टिक और हुआ ना हमारा सेटअप खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर आप वहां से सेल
ब्रेकआउट कर सकते हैं कि अगर वो, लेकिन वो इतनी स्लो मार्केट है, ब्रेकआउट का भी नहीं पता अभी। चलें जी, लो गया। वो खत्म हो गया आपका सेटअप। अब ये कंटिन्यू नीचे जा रही है, मैं बाय कर लिया, आपने सेल सेल कर दिया ब्रेकआउट पे, ठीक है। अब आपके पॉइंट बन गए, बन गया। डन। तो आपने समथिंग का ब्रेकआउट ट्रेड, प्रीवियस लो देखा, वो टूटा, आपने सेल किया, एक पॉइंट लिया, डन, ठीक है, गुड। तो आपने ब्रेकआउट ट्रेड लिया और उसमें आपको कुछ पॉइंट मिले, कंग्रेचुलेशन। $50 दे दिया। हाँ, कुछ इस तरह। अब ऐसे 50 या भी 500 भी आराम से। सही है। अब ये पता कहाँ बाउंस हो रही है, नाइट हाई पे। 9690 was night session high. तो वहां से क्यों, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है इसके बाउंस की। लेट्स सी टाइम विल टेल। सर कितने मिड बैंड हो गए हैं? 8 हो गए हैं। अब मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हुए हैं। अब आप 7वां लेंगे तो जितने पॉइंट है वापस कर देंगे। तो हाँ अब मुझे ये नहीं पता कि कितने मिड बैंड, कितने पॉइंट था। 700-800 के बीच में आ चुके हैं। मेरा भी नेगेटिव गया हुआ। 108 लो जी, नाइट सेशन पे आ गई, वहां से बाउंस हुई एग्जैक्टली 108 आपका, सॉरी नाइट सेशन की लाइन थी ग्रीन वाली, वहां से बाउंस हुई। How well did that work? इतना रेडीमेड में हिसाब किताब नहीं है। खरीदा कौन सा? आपको भी दर्द का बहाना नहीं है, दर्द का कोई बहाना नहीं है। हड्डियों का तो कायरो करता ना, कायरो करता तो इसको आता है। मेरा फ्रोजन शोल्डर था, हाँ 3 साल से ऑलमोस्ट ठीक है। सर एरिया था आपका, वो नाइट सेशन था, अब उसने जाना ही है ऊपर, थक गई है। 35 नाइट को, नाइट से आपको दे गई है 8850 वाले जो पॉइंट से, कितनी दे गई? 5 पॉइंट दे गई है। लोहे का है, ये है चल ले जा। ये मिड बैंड भी आपका 8वां मिड बैंड भी ठीक रहा। नहीं ना ले, अभी इसमें नाउ 30-20 को थोड़ा ब्रीदिंग रूम चाहिए जी। 0.3 वैसे जब गिरती है तो 0.0000 चले जाती है। आज टाइम लीजिए T20 का मिड बैंड अगर हो जाए गैप ट्रेड हो जाएगा प्यारा सा। चल लेना चाहिए अगर किस चीज का 30-20 का मिड बैंड? मुझे तो ठीक लग रहा है यार। कोई नाइट सेशन हाई से आ रही है, R1 के अंदर गिर सकती है।
अभी तो 15-10 जान छोड़े तो शाम के एरिया कब होते हैं? 9 बजे। आई डोंट नो कि आजकल होंगे कि नहीं, तो देखिए यस या मिड बैंड सेम। 20 बरस कह रहा हूँ। हर ट्रेड पे उतना ही रिस्क है, 50% से ज्यादा तो रिस्क नहीं है। 50% चांस है कि वो 100% पास होगा या फेल होगा तो मैथ उसका ही है। राकेश भाई, यस बॉस। टिकटॉक पे हाँ हाँ if I go live, how long can I go live for? forever 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, but you have to go live for minimum 35 minutes for 3 sessions to qualify, Qualify means? meaning कि qualify for some अगले राउंड पे आपके पक्का लाइव हो जाएगा। अब ये टेम्परेरी मिला है। 3 सेशंस करें घंटे घंटे के, बेशक बैठ के कुकिंग करते रहें लेकिन लाइव जरूर जाएं ताकि आपका लाइव की जो है ना। हाँ जी वेट करें, अभी हायर हाई नहीं आया मेरे भाई, अभी नहीं आया। अभी 30-20 का मिड बैंड टेस्ट होगा यहाँ पर। अभी 30-20 ग्रीन नहीं हुआ। लेट्स सी हमारी किस्मत क्या कहती है यहाँ। सर लेके जा रहा है। नहीं अभी नहीं मिड बैंड फेल। वेट करें अभी देखें। ग्यारह पॉइंट की स्विंग आ गई है। इट शुड गिव यू couple of points back and then maybe go up. अगर जाना भी है तो मिड बैंड को टच करके जाए ना, नीचे जाते जाते 2 पॉइंट दे जाएगा, अभी पता लगता है। लेके जा रहा है। आना चाहिए इसको। अभी तो लोअर लो के बाद लोअर हाई है, पहले हायर लो होगा तो मेरी होप खत्म हो गया। लोअर लो तक मैं बैठ सकता हूँ। It should come down, make a higher low and then go up. अगर यहाँ 15-10 का भी मिड बैंड है तो इसको 56.95 तक तो आना चाहिए। आमान एक पॉइंट ले लिया मैंने। ब्रेकआउट में। हाँ हाँ पिछला ब्रेकआउट लिया तो 1 पॉइंट ले लिया। एक पॉइंट ले लिया। Very close to my stop loss. Yeah, I don't know the answer.
ये 30-20 का मिड बैंड बहुत बड़ी रिट्रेस आई, स्विंग आई थी, तो लेट्स सी। अब आपको ये अगर नहीं निकले उस ट्रेड में से तो शायद चांस दे दे। जो 56-96 तक मिड बैंड है 15-10 का, क्योंकि 30-20 के हायर हाई में बहुत दूर है, 57-23 है उसके हायर हाई होते हुए, तो यहां से पहले हायर लो लग सकता है, फिर ये ऊपर जा सकता है, या दूसरा ऑप्शन है कि लोअर लो लगेगा। ये 30-20 में मतलब यहाँ तक जा सकते हैं। हाँ जी, पिछले हाई तक 57-23 है मेरा MES का पिछला हाई, ऊपर 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 ये ना 57-23 यहाँ तक जा सकती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वहां पर हाई हाई बनेगा, उससे पहले ये लोअर हाई रहेगा, क्योंकि इसको पिछली स्विंग तोड़नी है ना वो। All right, 12 minutes to go. No, 12, no, 15 plus 8 to go. टाइम पे ही आ जाते हैं 2 बजे से 2 बजे। ट्रांसफर कर दो और किस चीज का? माइनस 4 पॉइंट्स पे बैटिंग 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है 4.75 6 बार जा चुकी है। या 50 का लॉस बहुत बड़ी, देखते हैं हायर लो कब बनता है। आगे जी मिड बैंड के करीब। स्टॉप लॉस है 15 की बात करो ना। हाँ जी, हाँ जी। मिड बैंड 30-20 का वापस रिट्रेस हो गया, should be 0 now. If you want to get out you can. अब यहां मुझे चाहिए हायर लो 30-20 में टू गो लॉन्ग। ये मिड, ठीक है।
ये सीट तो लेकिन अब कैंसिल नहीं हो गया लास्ट में बिकॉज अभी तक जब तक हायर लो नहीं है चांसेस उसके कम है ऊपर जाने के। मिडमैन नहीं लेना था 1510 का नहीं लिया मैंने ना, उधर से रिट्रेस आ रही। अब हायर लो बना है मेरा, अभी अभी हायर लो अब हायर लो बन गया है। तो अब यहाँ से मैं ब्लैक कैंडल कंटिन्यू रखूंगा और फिर देखूंगा 30-20 पे। वेट करें 30-20 में 8.5 डाल के वेट करें। All right. I'll be back. शुरू ये तो वैसे ही $10 minutes to go. लाइव कमेंट्री आती है इसमें Every day. लो दोनों चले गए Lower double top, double bottom बना दे। डेढ़ पॉइंट बना लिया ब्रेकआउट पे 1 पॉइंट ले लिया। डेढ़ लिया देखिए इतना आसान है, 1 पॉइंट इधर, 1 पॉइंट इधर, 1 पॉइंट इधर, 1 पॉइंट कोई इधर। भी नुकसान हो कुछ भी हो आपको आपको पैसे मिलेंगे बस मेरा डेमो पे चल रहा है ठीक है, पहले डेमो पे प्रैक्टिस कर लेना। फोर आवर वाली कैंडल
ऑलमोस्ट सेम आ गई। अब देखें ये 57 को तोड़ती है 30-20 में कि नहीं। नैस्डैक का मुंह नीचे है, ये मिड बैंड चल जाएगा। क्योंकि नैस्डैक नीचे पुश कर रही है 813, 812, 14, 13। आगे 2 पॉइंट मिड बैंड से। 2 पॉइंट तो आ गए और लेने को रीडिंग 3 पॉइंट आ गए। Stop. Stop. छह मिनट और बचे। ओ या आप बताओ। S3 R3 यहाँ ये वाला 19,300, 320, 330। 19,300 लॉन्ग करना है 19,300 से। ऑलरेडी 302 पे है ऑर्डर।
19,302 से लॉन्ग का रखा है। मैंने प्रॉफिट का पता है क्या किया है? 0। जहाँ मेरा स्टॉप लॉस सेट हो गया, हेड हो गया। राफे भाई, एक माइक्रो लेके 30-30 का कर दूं? हाँ, वो भी तो हाँ, वो भी ठीक है। एक माइक्रो से कुछ ना कुछ तो निकल आएगा यार, इतना बुरा हाल तो नहीं। तो 30 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट नीचे और 820 850 लगा देता हूं। पिछला ब्रेकआउट All right, guys, 3 minutes to go before the fireworks start. Let's see. I'm going to shut off all my non-relative charts because I won't be able to see nothing. So the less I have running on the computer, the more I can see. So I'm not looking. सर होने लगा एक्सप्लोजन बस और बोलने लगा आके कितने टीवी ला दो। नहीं सर आप देखें एंजॉय तो करें ना, क्या होगा क्या। एंजॉय करेंगे ये इलेक्शन है ना, अभी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, मैंने जीत लिया मैंने हार लिया। So आपने किसको लगाया राफे भाई? मैंने सर एक्सपेक्टेड लो पे नैस्डैक 5 MNQ। एक्सपेक्टेड लो पे 5 मिनट। हाँ 19,000 अगर लेकिन पहले S2 भी है, S2 भी ठीक है क्योंकि देखिए ना 815 से ये 680 एक्सपेक्टेड लो। पहला इसको तो ब्रेक लगनी चाहिए S1 पे जाके, मेरे हिसाब से पहली ब्रेक 19,660 पे रुकना, 200 पॉइंट की ब्रेक तो वहां लगेगी ना। S1 एक्चुअली विल बी अ स्ट्रॉन्ग वन फॉर Nasdaq। R3 तो बहुत दूर है। R3 कितने 20,000 है,
लो जी गिर गया, आपका हो गया काम। कहाँ गई, किस साइड पे गई? S2 S1 तक नहीं गई, S1 निकल गई, R2 तक आ रही है। देखें किसी ने OCO तो ले लिया होगा। हुआ है कुछ? नहीं, क्या मतलब नहीं हुआ? उसने ऑर्डर नहीं पे 870 R2 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 तो ये गया। लो जी, एंड गेम इज ओवर। R3 फिर चले जी, R3 की तरफ जा रही है ये। शूट कितनी की इसने? 765 से 891, 150 पॉइंट ऊपर शूट हुआ। Let's see. I don't know the results for anybody yet. अभी 230 पे है ना अगला, वहां पर भी, क्योंकि अभी तो उसने स्पीच देनी है अभी तो सर। तो स्पाइक आई है जी कितने पॉइंट की? 900 माइनस 765। करें तेज होगी मार्केट तो। So this spike was from 19,765 minus 19, very close. नहीं, इंटरेस्ट रेट इसका मतलब है कि अनचेंज रहा ना। So it means no interest hike, no down. So same news. मार्केट बैलेंस रहेगी ना सर? बेरिश बुलिश दोनों ही हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं कम किया तो अपनी जगह पे खड़ी हुई है। जो कमेंट्री जिसको देखना पड़ेगा ना, इकोनॉमिक फोरकास्ट के ऊपर, प्रोजेक्शन के ऊपर। Right now they are not reducing the interest rate. That's what they're saying. But they're saying that Fed will stay Same. to rate cuts this year. अभी बहुत वॉलेटिलिटी है जी, पता नहीं। तो S2 रखें जी आप, S1 S2 Nasdaq का, क्योंकि 230 पे क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ, तो लुक फॉर S2 एंड S1, क्योंकि होगा ये कहाँ से स्टार्ट हुई है? 19,766, 19,000, राइट? सो फ्रॉम देयर टू 680 इज अ बिग गैप. So S1 is relatively, I think, should be okay. So पहले S1 देखें कि बाउंस करती है कि नहीं। पहले हम S1 का देख रहे हैं ना। अभी तो वही R1 में घूमी जा रही है दोनों।
All right, guys, nothing major. Next spike is at 2:30 because of FOMC statement. If you're selling, maybe you're making quick money, but price came down to exactly where it started and nothing happened. So it shot up 200 points from 800 to 900 and then came down 100 points. So a good area, maybe S1 and then S2. So time to wrap it for me. सर अभी भी मैं कह रहा हूँ S1 ठीक रहेगा क्योंकि अगर आप 60 मिनट का चार्ट देखें ना, ब्लैक कैंडल भी वहीं पर बनी हुई है, नाइट का लो भी उधर ही है, सारा कुछ S1 ज्यादा मुझे नजदीक नजर आ रही है. सर दोनों मुझे अगर सेटअप सेम रखना है तो मैं ये इसको यस कर दूँ. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. पहले मेरा 30-20 पे था तो अभी ये हाँ जी, करूँ ना. यस यस, थैंक यू, वेरी गुड. कह सकते हैं जी इंटरेस्ट रेट सेम रहा तो कोई न्यूज़ नहीं आई. No news is also news, right? अब वो कहेगा इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे हैं, बोलना शुरू करेगा, हमें तंग करेगा.